We'd like to start the proceedings with the recitation from Holy Quran, for which I would request Hafiz Mustafa to kindly recite from verses from Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Translation. Indeed, of the heavens and the earth, the alternation of the day and the night, the ships that sail the sea for the benefit of humanity, the rain sent down by Allah from the skies, reviving the earth after its death, the scattering of all kinds of creation throughout, the shifting of the wind and the clouds drifting between the heavens and the earth. In all of this are surely signs for people of understanding. Sadaqallah. Jazakallah Sadaqallahu al-Azim. May I request the President, Pakistan Academy of Engineering, Professor Dr. Jamil Ahmad Khan, to kindly give his presidential address. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Respected speakers, my dear fellow engineers, honorable guests, ladies and gentlemen, Salamun ala man. Pakistan's energy demand is increasing daily, reaching more than 84 billion tons. Fossil fuels dominate Pakistan's energy sector. As we stand at the crossroads of an energy transformation, the global urgency to transition towards cleaner, greener, and more with its abundant biomass resources, Pakistan holds a unique opportunity to harness bioenergy to meet its growing energy demands while mitigating climate change impacts. The annual production of about 121 million tons of agriculture residues, 427 million tons of annual manure, and 7.5 million tons of municipal solid waste in Pakistan offers a variety of bioenergy options ranging from biofuels to bioelectricity production. Overall, these biomass resources in Pakistan have the potential to generate 20,709 megawatt of bioelectricity and 12,615 million bioenergy plays a pivotal role in the circular economy by converting agriculture and organic waste into valuable energy and bioproducts. This not only supports rural development and job creation, but also reduces environmental pollution and dependency on imported fuels. Our discussion today will illuminate how innovative bioenergy technologies can be leveraged for sustainable development, especially in a country like ours, where resource optimization is paramount. I would like to extend my deepest gratitude to our distinguished speakers who have joined us from various esteemed institutions, Dr. Mohammad Hassan, Dr. Mohammad Shahzad Khurram, and Mr. M. Sarwan Aryan, CEO of Messick Group, and Professor Dr. Naseem A. Khan, our Executive Secretary, will offer an overview of bioenergy's current status and future prospects in Pakistan. Thank you very much, and I look forward to an engaging
and fruitful session. Thank you. After the presidential address, we are supposed to have the first presentation on bioenergy and circular economy of Pakistan by Dr. Mohammad Hassan, Associate Professor, US Pakistan Center for Advanced Studies in Energy, Islamabad, followed by Innovative Bioenergy Technologies for Sustainable Biomass Utilization by Dr. M. Shahzad Khurram, Associate Professor, CompStats University, Islamabad, and Lahore campus, Lahore, followed by Biomass Gasification, Power Generation, Green Energy by Engineer M. Server Arai, Chief Executive Officer of MISAC Group of Companies, followed by Bioenergy in Pakistan by Brigadier Professor Dr. Naseem, Executive Secretary of Pakistan Academy of Engineering. This will follow by discussions and closing remarks by the President, followed by a simple lunch. We have Mr. Our first speaker is trying to come in. We have some glitches in the as usual. We have some glitches on the internet. We'll continue to talk on bioenergy. Hopefully he should be joining anytime. Meanwhile, we have Mr. Suhail P. Ahmed, Mr. Alex M. Smith, and we have several members who are participating physically. Oh, at the moment we have Dr. Mohammad Hassan on net. We'll start the presentation. Meanwhile, would you? क्या हो गया? आप sure? Biomass, biogas, biofuel, bioethanol, all have their own tremendous market. Yet, Pakistan has not given the due recognition to these sources of energy. Only because no international donor has proposed to Pakistan. Dr. Hassan, are you online? Yes, Dr. Hassan, you are muted yourself. Could you unmute yourself? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? ठीक हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र है। Dr. Hassan, welcome, and we are anxiously waiting for your presentation on bioenergy circular economy. शेयर करा दीजिए। मैं शेयर करता हूँ। मैं सर शेयर करता हूँ। जी शेयर कर दीजिए अपनी प्रेजेंटेशन। जी। कैसा है वेदर? कैसा है? How is the weather in Islamabad? It's little cold. अच्छा। Sir, it's little cold. Yes. I will share my screen. Yes, share. That is screen. I hope you are having a 40 minutes presentation around that, right? Inshallah, sir. It will be finished in time. Inshallah, sir. Inshallah, sir. Yes, sir. We can see. We can see your presentation. Okay. I can. Shall I start, sir, or I should wait for some time? Please start. Okay. Please start. Okay. First of all, Assalamu alaikum, everyone, all participants. Thank you very much for joining, and I want to elaborate my thanks to Pakistan Academy of Engineering for inviting me on this talk, on this honorable moment. And my talk title is Bioenergy in Circular Economy of Pakistan. And currently, I am working as Associate Professor in Energy Systems Engineering Department of US Pakistan Center for Advanced Studies in Energy at National University of Sciences and Technology.
I have completed my PhD from master leading to PhD from China back in 2017. And after that, I have joined NUST, and I'm working in the same department since 7 years. So first of all, I want to just elaborate what is a little bit about bioenergy. Any type of energy which is obtained from living materials, like from the process of biological carbon fixations, like living tissues and living animal bodies, any type of plants, residues, agriculture, etc., that basically called living organisms. So all type of energy that is obtained from these materials is called bioenergy. So carbon fixation basically is a chemical process in which hydrogen molecules that would be found in the living organisms, and that basically converts carbon dioxide into hydrogen molecules. If this process occurs in living organisms, it's referred to as biological carbon fixation. So first of all, I will just elaborate a little bit about biological carbon fixation. So what is that? I think it's about photosynthesis process. Can just take it a little bit side. Yes. So it's like a photosynthesis process in which plants can respire, and plants can prepare its own food in the presence of sunlight, in the presence of water and carbon dioxide. They will absorb from atmosphere, and they prepare glucose. And that glucose basically is a carbohydrate, which is basically a component of carbon, hydrogen, and oxygen. And this carbon and hydrogen that has been fixed from atmosphere, this will be basically converted into living tissues, and that living tissue will be converted into bioenergy. So this process is called carbon fixation because they fix the carbon from the atmosphere, and the carbon dioxide utilization will be carried out by plant and living tissues to produce energy. This is just a little bit overview about solar energy, about different type of biofuels and different type of bioenergies that we basically utilize, and how they are produced and how they are linked with our life. For example, carbon dioxide that is being emitted from industrial processes, from commercial processes, and from the different agriculture sector, and carbon dioxide that has been emitted from the transport sector, that carbon dioxide basically accumulated in atmosphere. And what we are doing, our production rate of carbon dioxide at this time is higher than its sink rate. So first of all, we need to increase the sink rate of carbon dioxide, and how we can absorb that carbon dioxide only through carbon fixation and only through forestation and afforestation. There are different technologies by which we can reduce carbon dioxide contents. But basically here, because we are talking about bioenergy and carbon fixation, so our objectives will be around dealing like how the biomass can be produced, how trees and forests can be produced. And these trees and forests basically these utilize and sink this carbon dioxide, and they will be harvested again, and they will produce cellulosic material and carbohydratic material, like we have discussed here, like this carbon and hydrogen species, and these contents that is basically produced from as a result of photosynthesis process. And after the cellulose production, after the treatment processes, after sugars and fermentation processes, they can be converted into biofuels and different type of bioenergies. So all this process is linked with each other. All steps are very much important for this universe, and they are naturally occurring steps. So here is basically overview of bioenergy value chains, biofuel value chain, and conversion processes. I will first invite all of them. Yeah. Yes. Okay. There are different biomass resources like agriculture, etc., oil-bearing plants, agriculture crop residue, woody biomass, industrial and municipal solid waste is also somewhat fall under the category of biomass resource. And there are different conversion processes like chemical transesterification process by which we can produce biodiesel and transportation fuels, physiochemical extraction procedures like solid fuels, solid recovered fuels can be produced like wood pellets and charcoal, and biochemical fermentation process that has been heat and electricity can be produced by this process. Biochemical fermentation mean by which ethanol can be produced. And then thermochemical procedures that are basically gasification.
And through the gasification process, high value, added value chemicals, pharmaceutical, and polymers can be produced. There are different type of biofuels like bioethanol, biogas, biodiesel, and biofuels and biohydrogen, like we have discussed in the previous slide. And they have their own specific names and their feedstock and their conversion technology, especially, for example, to produce bioethanol, we use advanced hydrolysis and fermentation process. And for the production of biogas, we use pyrolysis, anaerobic digestion, and gasification procedure. And for the production of biodiesel, we use pyrolysis, gasification, and synthesis process. And other biofuels like biomethanol, heavier mixed alcohol, bioethyl ether, dimethyl ether, they can also be produced as a byproduct of gasification and synthesis process. Biohydrogen is also gaining much importance these days, and this is also a type of bioenergy which can be generated from lignocellulosic biomasses through the process of gasification, synthesis, and biological process. Different type of energy generation from waste resources, like there are also a lot of waste resources we have also in Pakistan that are animal manure, livestock manures. We have million cattle and farming availability in Pakistan. So therefore, we are producing million tons of animal manure annually, and that manure directly is being dumped into fields, into agriculture fields, and we are not capturing methane from that resources, and that methane ultimately is emitting into atmosphere and accumulating into the atmosphere and producing a lot of greenhouse gas emissions portfolio for Pakistan. So what we have to do, we should capture methane and energy resources, bioenergy resources from animal manure also. Agriculture crop residue, as you know, that major cities, commercial cities of Pakistan is facing much more problem of smoke these days. And sometimes some research analysts show that this smoke came from direct burning of agriculture straw, direct burning of rice straw and stubbles in the agriculture fields. And when they directly burn it and then smoke produced, because weather is going to cold, it's around in the month of October or November. So agriculture crop residue is also much available resource, bioresource in Pakistan, and we can capture these resource and we can utilize for bioenergy production through different chemical and technological conversion routes. Forest residue is also a lot of million tons of bioresource that is available worldwide also, and also in Pakistan we have much resources of forest residues. Municipal solid waste, of course, every city is producing municipal solid waste, and which can be pyrolyzed, which can be incinerated, and energy is being produced from that resources. Sewage sludge is one of the bioresource. Biomass to high value add chain chemicals as an emerging chemistry. Besides biofuel and bioenergy production from different biomass resources, bio-waste resources, there are also a lot of side byproduct industries also there. For example, different type of extraction of chemicals can be possible from agriculture and lignocellulosic biomass like proteins, vitamins, fragrances, pharmaceuticals. They can be extracted from biomass. Different type of chemicals like glycols. Besides the production of biodiesel, it is also possible. If we will talk about the sugar fermentation, we can also produce lactic acid and different chemicals. And besides, if we'll talk about thermochemical conversions and different type of chemicals and biosynthetic gas, that can be also as a byproduct, it can be produced. So all these type of byproducts, they can also be utilized in our supply chain, in our chemical energy demands. Technological criteria, for example, bioenergy, that how much is energy content it has. For example, if we are going to produce biodiesel, bioethanol or biogas, then how much is energy content that gas, 1 mole of that specific gas has, and how much is it consumes, its availability, its carbon residue, its sulfur content, its viscosity, density, efficiency, and scale-up procedures. So all these basically technological criteria on which bioenergy technology adaptation in our society basically stands. So and next is the financial criteria. That is very important. If we do not have finances, if we do not have static dynamic or risk-taking finances, then definitely technology is there, but technology cannot be commercialized. And that's what's happening in Pakistan. We have technology, and all the leading developed countries like Germany, even China, even USA, they have developed a commercial scale plants for bioenergy production by considering their waste and bio-waste resources. But in Pakistan, due to limitation of
financial criteria, due to limitation of financial resources, we are much behind that countries. Environmental criteria is also there, that is carbon dioxide, carbon monoxide, NOx and SOx production. That is basically, if, for example, if we are going to install a commercial scale bioenergy plant, then definitely we must have to consider that how much toxic gases that plant basically going to emit. So basically we have to do its environmental impact assessment in details. So socioeconomic criteria is also that how much socioeconomic criteria basically is the social adaptation of bioenergy technology inside Pakistan. For example, if we are going to install a biogas plant in a local vicinity, so are the people of that specific area are interested to utilize that biogas, or they will just utilize the natural gas, because we are very lazy people in Pakistan, and they do not want to adopt the new technologies, new emerging technology. This is a little bit map about low carbon future, towards the low carbon future, and that map basically developed by IEA, International Energy Agency. And that is the baseline, and they have developed these blue maps up to 2050. They have forecasted what is basically low carbon future. Basically, all the countries, all the developed countries, they are nowadays they focus to produce electricity and energy resources in such a way that they will reduce and they will produce zero carbon dioxide emissions. That is basically called low carbon future. Because due to greenhouse gas emissions and due to different criteria, people want to reduce the carbon footprint of the world, of the universe, because overall the temperature of this planet is increasing. So basically everybody is going to shift towards low carbon. And we can see the power sector that basically contributes to 32% carbon emissions, and the industrial sector is contributing 16%, and transport is 23%, buildings are 14%, and other transformations that basically contributes 14% to the carbon emissions. And that basically forecasting have been mapped as compared in 2010 and between 2050. So basically low carbon future will be developed in the coming decades. That is also another map that is basically indicating that how much basically energy, how much final use of biomass in different sectors from 2010 to 50, and their roadmap. For example, bioenergy adaptation that basically is showing in the blue map. Here we can see this blue map at the bottom. For example, we are here in around 2025. So this blue map is indicating the utilization of bioenergy in total energy production portfolio of the world. So biomass currently provides around 1,100 million tons of oil equivalent, that is equivalent to 50 exajoule of primary energy per year. And that trend basically is increasing year by year. And by 2050, its share will be more than 20%. More than 18 to 20% is expected in 2050. So adaptation of biomass for bioenergy production worldwide is gaining much importance, and it is increasing year by year. Biomass electricity global markets report, that is basically a survey report and has been produced in recent year, and they have made a prediction of 7.5% rise of bioenergy production worldwide, energy production from biomass resources. And in 2018, basically the total entrepreneurship that has been coming from the bioenergy production sector will be around $64 billion, $54 billion US dollars. So bioenergy production from biomass resources is also a very much commercial and attractive business for small and medium scale enterprises. And from this graph, we can also indicate that this business is growing and this business is rising year by year. Global biomass potential. Globally, we have a lot of biomass resources. We have a lot of biomass potentials, and biomass for biofuel production is around 65 exajoule of carbon residue, of biomass residue that we have.
And that is basically we have these resources and they are available for the production of bioenergy, biofuels, but basically roadmap of the world for the primary energy supply, that is basically this map indicating the maximum technical biomass potential up to 2050, that how much million tons and thousands of million tons of highly equivalent energy we can produce by this year. Biofuel roadmap VN, that in another graph produced from the International Energy Agency, that is global biomass growth from 2.5 exajoule to 32 exajoule in 2050. So basically the biomass and biofuel production rate basically is increasing year by year, and from it is increasing. It is expected that it will increase from 2% today to 27% in 2050. So 2% it was measured in 2010, and here we are in 25 now, and up to 2050 it is expected that the bioenergy production rate will be around 27% in 2050. So here I have just added a little bit introduction of different technologies, that how they work and how they will be beneficial for Pakistan. So anaerobic digestion basically is a procedure in which methane can be produced. What we do basically, this is a biological process in which we dump livestock manure and lignocellulosic straw into a biogas digester, and through the process of fermentation, through the process of methanogenic bacteria, that bacteria basically decompose that manure and utilize that substrate and produce carbon dioxide and methane. And that carbon dioxide and methane is emitted, and methane, because it is a combustible gas, it is a major portion of natural gas also. So it can be combusted by different sectors. It can be combusted for heat purpose, for heating and application purposes, for lighting purpose. Also, it can be used in kitchen for cooking purpose. Also, that biogas can be utilized for production of electricity on commercial scale. There are also commercial scale farms in China, in Germany, in developed countries. There are a lot of commercial scale anaerobic digestion farms by which they can capture methane and they produce electricity from that resource, from that energy resource. What are small-scale anaerobic digesters? Small-scale anaerobic digesters, basically in Pakistan, there are also a lot of small-scale anaerobic digesters, and they basically produce a lot of biogas. In Pakistan, in Sheikhupura, I know some entities are there, some commercial small-scale entities are there. They are basically doing this business. And for example, they are utilizing cow manure and livestock manure, buffalo manure, to produce, and they feed their excreta into the biogas digesters. Also, they can use kitchen and garden and organic waste, and they produce biogas, and biogas can be utilized for cooking, lighting, heating, and electricity purpose. In Pakistan, there are also a lot of, in thousands, there are thousands of biogas digesters that are working. Gasification technology, that is gasification-based power plants. In gasifier basically is a commercial gasifier that basically we feed biomass like agricultural straw, livestock sluts and pellet sluts, solid recovered fuels, and solid stubbles, and wood resources, cheap woods and cheap resources, and sawdust also can be fed into gasifier. And that gasifier basically is operating at high temperature like 500, 600, 700 degrees centigrade and produce syngas. And that syngas basically is cleaned through the scrubbers and gas cleaning systems. And when this will pass from these scrubbers, then it will be fed into the engines. And engine can be operated on hydrogen-based gas. And syngas basically is a mixture of carbon monoxide and hydrogen. And that basically gas will be utilized for production of power, and that gas basically also can be utilized as an other heat applications, like if we have some dairy farming industry, if we have some small scale industry, and if they need a lot of heat, so syngas can be burnt directly and heat can be produced also. And heat can be utilized for their industrial procedures also. But electricity can also be produced by the gasifiers. Here is also a supply chain procedure for working of the biogas gasifier, like fuel in feed system that is locally available wood waste. It can be including recycled clean wood waste, construction waste, municipal tree trimming waste. It loaded into the fuel bin,
and that fuel bin basically is collected with conveyor that will carry that waste and produce it to the gasifier. It will transfer that into the gasifier where it will be gasified and burnt in the absence of in the presence of little oxygen, and then oxidized. Then syngas will be produced, and that syngas will pass through scrubbers for cleaning applications, for cleaning purposes, and directly gas can be utilized for power production facilities. EHP is basically called electrostatic precipitators that are utilized as an assembly of the fuel gases, and that is basically capture the extra heat produced, and they basically reduce the heat wastage in the boilers. Biodiesel production. Biodiesel is another form of bioenergy that in Pakistan can be also produced from raw waste resources and non-edible oils like jatropha. Jatropha is a plant, and jatropha has some seeds and has a lot of oil, and these seeds are basically collected and then they have been crushed for extraction purposes. And after extraction and processing of the oil, then transesterification is a chemical procedure in which methane, sodium hydroxide or calcium hydroxide basically is added, and then biodiesel and glycerol has been produced. So then they have been separated. And biodiesel basically is an alternate of diesel, but its energy content and viscosity is little bit different as compared with petroleum diesel. But biodiesel can directly be burned into internal combustion engines also, diesel engines also. So biodiesel is also another bioresource, and its technology, its production route is little bit different as compared with the other technologies. This is a little bit conceptual diagram for the waste to energy plant. Waste to energy can be produced from the municipal solid waste, and municipal solid waste basically first it is segregated. And after segregated, that is, if we start from here, that is incoming waste is coming, and that it is going into the landfills, and then we will collect it. And then after collecting, its segregation will be there. After segregation, the waste fuel will be utilized for energy generation. And after energy can be utilized for any type of applications. For example, if the electrical energy is there, it can be transmitted into grids. And for example, if heat applications we can make a combustion of that gases that are coming from the after the gasification or pyrolysis process, and the bottom ash will also be produced that can be utilized as a soil conditioner into the our gardens, into the agriculture forest, into the agriculture fields. It can be utilized. And this is also another conceptual diagram for waste to energy plant for future. This is basically a similar concepts, and these type of waste to energy plant basically have been well developed in USA and in Germany. In Japan is much ahead in this technology. Japan utilizing its municipal solid waste through the process of incineration, and they produce millions of megawatts of electricity through process of incineration by combusting its waste. Singapore is also much ahead in this technology, and China is also developing a lot of commercial scale waste to energy treatment plants. I have added a little bit 1 to 2 pictures at the end of this lecture. Here is also another type of bioenergy capturing technology, basically, which is called landfill leachers. Landfills, basically, what we do, we have basically designed a specific area, and we are dumping a specific type of municipal solid waste in different layers. And after decomposing this municipal solid waste, they will basically, 2 things will happen. After decomposing, the gas will be produced, and that gas will be methane. And it will come out on the surface of this landfill. And the leachate, that is basically liquid digestate. And that liquid digestate will settle down at the bottom. And the liquid digestate will be absorbed and sucked from the bottom through these liquid storage vessels. And then this liquid leachate is also very rich in energy contents, and it can be burned. It can be converted after different thermochemical procedures. It can be utilized for energy generations. And the methane which has been captured from different layers of these landfills, it is collected from the surface and sucked back through the gas collection system, and electricity can be generated from that methane gas also. But this technology is very much dangerous for the groundwater resources, because
the gas and leachate that is basically going down and settling down at the bottom. It has a lot of dangerous risks towards, and it can sink towards the groundwater resources, and our groundwater can be polluted also. So a proper groundwater monitoring is also a prerequisite for these landfills. This is old technology, and nowadays anaerobic bioreactors are not basically followed. They are not basically recommended by the environmentalist because they have a risk of groundwater contaminations, because groundwater is very much important for the population that is living nearby commercial cities and big cities. This is another concept and another basically overview of different type of waste energy treatment plants. And for example, how incinerators, the incinerator design, that how municipal solid waste basically is collected in this section, and then this municipal solid waste basically is feedback into the incinerator, and that incinerator basically high temperature combustion vessel, high temperature is there, and combustion is carried out in this section, and then after the combustion different heat is produced, and that heat basically converted into steam, and then or after that steam can be utilized for power generation and other facilities. Up till now we have 22.5 million PKR grants, and we have 10 MS and 4 PhD students working on our biomass conversion group. So we have 20 kilowatt pilot scale gasification system here, which is funded by the Pakistan Science Foundation, and we have successfully installed it. Now it's in operational form, and students are working on it. We have actually this is fully automatic SCADA based gasification system plant. We also have a 5 kilowatt lab scale gasification plant and some other facilities as well. So this is the brief introduction of mine and my group, to whom I'm associated nowadays. So first of all, points of talk is of my presentation is potential of sustainable biomass utilization, current energy challenges in Pakistan, and role of biomass in the energy mix, and biomass conversion technologies. Biomass-based energy potential in Pakistan. As Dr. Hassan already mentioned through data, that Pakistan has a huge abundance of resources of biomass. Today, but I would like to talk about only the waste biomass, which can be utilized for the energy production. So Pakistan generates sustainable agriculture waste, including wheat straw, rice, sugarcane bagasse, and cotton stalks, and sesame, which can be utilized as a waste biofuel. So yes, ethanol can be produced through some which can be eatable sources. But my point is only I would like to draw your attention only toward those resources which are based on waste. So these residues can be converted into bioenergy through technologies like gasification, pyrolysis, and anaerobic digestion. Potential output is this study estimate that agriculture residue could contribute over 25 million tons annually for bioenergy production in Pakistan. So in Pakistan, you can see agriculture residue amount up to 25 million. Animal waste, biogas up to 10 million, municipal solid waste up to 15, and forestry residue can be up to 5. Energy crops and hybrid system can contribute up to 12 million. So these are the potential biomass resources in Pakistan, which is needed to be utilized to cover the gap of energy crisis in Pakistan. So there is a need to take action, and I think this platform can convey the outcomes of our suggestions and outcome of our presentations to higher up to implement these things in Pakistan. So energy mix in Pakistan is around, we can generate 46,000 megawatt as per government statistics, but out of them only 249
megawatt is being produced from the waste biomass, which is just 0.54% of our total uh, power mixture. So there is a need to enhance, as Dr. Hassan already mentioned that, uh, and I in UK, the 8% their energy is being produced from the biomass. So compared to 8% and 0.54%, so there is, and in China, Korea, Japan, Singapore, even Thailand, they have much higher figures as far as biomass is concerned. So we need to enhance these 0.54% to at least 5% or 10% in coming years, so that we can have less dependence on fossil fuel, as well as our cash flow in terms of dollars could be reduced. So there is a the need to increase the biomass in energy mix in Pakistan. So these are some plants which are which are using the biomass for energy production. These power plants are Jamaldin Wali 2, Jamaldin Wali 3, Rahim Yar Khan Mills, Chinnot, Punjab, Rahim Yar Khan, Layya, Miawali, and Faisalabad. Different locations, but they are based on actually combustion based. Combustion is not considered a clean technology for as far as environment is concerned. Nowadays, you can see the global warming, and Pakistan particularly, we are facing the smoke issue. So combustion is one of the technology which contribute in the smoke pollution. So there is a need to increase the to adopt the technologies which are more clean and environmental friendly when we use the biomass. So these are actually the combustion-based technologies. So Pakistan, as Dr. Hassan already mentioned, that wheat straw, rices, corn, bagasse, sesame, animal manure, municipal solid waste, and forest residue, they are abundantly available. There is a need to channelize them. There is a need to make them use in a sustainable and economical way. So this is another study which I found from Fatma Fertilizer. They are actually working on a sustainability and sustainable model nowadays, and they had adopted it quite well. So I got some data from them, because they have converted most of their power generation on biomass. This is the first uh, factory or first industry in Pakistan which are relying on biomass instead of biomass and coal. Actually, they have mixed biomass and coal for their energy production, and they have developed a sustainable channel about to getting the biomass in Pakistan. Because in some industries where I visited and when I encourage them to utilize the biomass, they have uh, to that Pakistan, we cannot store for a long time because the crops actually they have their own periods, and we cannot keep them for a long period. So this I got this data from Fatma Fertilizer, who has successfully implemented their own bioenergy their power production on bioenergy. The canned trash they got in from November to March, they store it in this period. And the corn stalks they got in May to June, and mustard stalks in January to March, cotton sticks in October to December, and sesame residue from August to September. Wood sawdust year round, they can actually get, when brassica from January to March. And this actually data uh, give a guideline to those industry who have an issue
with obtaining or getting the sustainable supply of the biomass. So if we can share this data with them, then their team can easily manage the dependency on the biomass in Pakistan and dependency on production, and they can have throughout year they can produce the energy on biomass. So I'm thankful to the Fatma Fertilizer for providing me this data. But as Dr. Hassan mentioned, that in Pakistan, there is scarcity about the utilization of biomass as an energy resource. Yes, direct combustion is available. But why? Let's discuss about why this we cannot make our industrialist or the farmer to utilize biomass as energy resources. The four challenges I have come after my research that collection and transportation logistics. This is the one of the major issue our not only the industry facing, but our farmer is also facing. That the as I said that the crops are have their own period. So, for example, we can get wheat straw only in March or April. So throughout the year, we have to store it and transport it to the other cities and the locality where it can be utilized sustainably way. Second one is technological limitation. I know in Pakistan, I have visited some biomass-based gasification plants, and three or four I can found, and only one was operation, and three of them they have dumped it because of technological reason, because of some hurdles, some labor issues. Because it is very easy to combust something, but it is very easy to. It is difficult uh, to run or operate a technological based instrument or system for a long period of time. So there, there is a technological limitations as well we have, and lack of awareness and infrastructure. We need to educate not only our students about the biomass diversity, biomass utilization, waste biomass. When I say biomass, I say waste biomass utilization. And we need also to educate our farmers as well, because farmers don't know about the importance, about the value of the waste biomass. They also sometimes utilize it for the combustion purpose only. They just know only one purpose, combustion. So we need to make them aware, and we provide them subsidy, we provide them some technology to use their waste biomass into a valuable product, which can be a syngas or something, pyrolysis, whatever. We will discuss it and already discussed. And so lack of awareness infrastructure, it is on our part. Our educational community should visit the farmers and arrange seminars for them to make them aware about awareness about how they can use waste biomass in a proper way. So, and the last one is the policy and regulatory gap. No one is interested in implementation of what are the recommendation of scientist community, what are the recommendation of research community, university community, and institutions. A lot of institutions, US institutions in Pakistan, so many institutions, they have come with their policy, and they have suggested so many plans to the government, but unfortunately none of them has been implemented yet. Everything is available, every data is available with Pakistan, with Pakistani researcher community, with you, Pakistan Engineering Academy. Even I am sure they have a lot of uh, suggestions for up hires, but unfortunately, due to the lack of policy and regulatory gaps, it is beyond the implementations. So we are still, after 17 or 20 years, we are still doing combustion. We only one technology our farmers know, or one technology I know, or one technology our students know. They are very easy to combust something, to get rid of.
So there is a need uh, to force the government higher ups to bureaucracy to implement the policy and regulatory suggested by we will keep on talking these things every day, every year, on every forum. So these are, I think, the four challenges. Because of them, the utilization of waste biomass in Pakistan is suffering. So innovative bioenergy technologies based on waste biomass is biomass gasification, pyrolysis for biochar into bio-oil or biochar, anaerobic digestion, algae-based biofuels, hybrid biomass, solar systems, or cellulosic ethanol production. Sorry. So Dr. Hassan already have discussed about this technology, but I will go through a little bit about it. And I think next lecture is also a comprehensive discussion about the biomass gasification system. So biomass gasification system is utilizing biomass, waste biomass, and it convert into syngas, which is a combination of hydrogen and carbon monoxide. And hydrogen and carbon monoxide can directly be used as a fuel, and it can also be converted into valuable products by using a suitable catalyst like ethanol, methanol, aldehydes, ketones, whatever the product, organic product we can. Even nowadays, uh, some fertilizer industries, they are thinking about, because the main source, the main raw material of fertilizers are the hydrogen and carbon dioxide uh, for the production of ammonia or urea. So they are first, what they do, but they have to convert methane into hydrogen and carbon monoxide. So they are also thinking about agrochemical. They are working on a biomass gasification plant to convert biomass into hydrogen and carbon monoxide. And further, they can utilize hydrogen for the production of ammonia and carbon monoxide for the production of carbon dioxide. So this is one of the another way to use to convert the waste into valuable product, into high value product, not only fuel but and other chemicals as well. So it can be applied in the gas can directly be used for the in a gas turbine, or it can be used for the manufacturing of chemical products. Because high efficiency and low emission, it can be considered as a clean energy production technology. So less emission, low, highly environmental friendly technology. Next is the pyrolysis for biochar and biogas, bio-oil. Let me complete. Let me introduce one more thing here in gasification system. In 2019, I visited China for a training purpose on gasification system, and I visited so many gasification plants there. They have actually running their minimum capacity of their gasification system in the industry was 1000 megawatt. This is a huge system based on biomass. Which biomass? Not the crop residue, or they are actually utilizing the wood, which is waste wood from the household, from the furniture houses, from the industry, which are using wood, and they collect their waste wood from different areas, and then they utilize it to convert into, not only convert into syngas, but also they also get activated carbon at the bottom of the, usually if you can see that this is the biomass gasifier. We produce syngas from one side, and at the bottom usually we get ash. But technologically they have advanced this their gasification technology in a way
that at bottom, instead of getting ash, they are getting activated carbon. They have their developed their system in that way. Bottom valuable product, and the gas is also valuable product. So this is my experience there. And also next is the pyrolysis for biochar and bio oil. It is also a good industry in most of the countries like India, China, and they have now upgraded it to the industrial level as well. But in Pakistan, unfortunately, we don't have such facility. It is also like a gasification system. It is pyrolysis also is a thermal decomposition where without oxygen, we thermally decompose at different high temperature, like 400 temperature, sometimes 600, based on the condition, which is our primary product. For if our primary product is char, we have to restrict our temperature up to 400 Celsius. If we want to get bio oil, then we have to increase the temperature up to 600 or 700 Celsius. So this is also environmental friendly technology for the production of fuel from waste biomass. Anaerobic digestion for biogas. This is a highly promoted or accepted in all over the world. Let me share one more that just 1 minute. Let me introduce just one thing. Share one website. I would like share one website here. Okay. This is a renewable energy magazine. I regularly read it, and I would like to share some of the projects in the worldwide which is being adopted or conducted. Here you can see, if you see the bioenergy section, you can see biofuels, biogas, and biomass. If we see biogas, if you visit this page, and you will see a lot of data about the projects which is world is now working on. You can see 22 BCM of biogases were produced in Europe in 2023, according to EBA report. So you will see a lot of biogas plants and biogas research data, biogas related each and everything. In India, you can see Suzuki to build new biogas plant in India. Even though Pakistan has an abundant resource of manure, animal waste, but unfortunately, none is being used here. They are also in Pakistan. This waste is also being wasted. So this is a dilemma of our country, that even in last 5 to 10 years back, the government of Punjab provided and installed some bio gas plant based on animal manure to the farmers, and the cost was shared 50-50. But unfortunately, most of them nowadays are not working because of the negligence of the farmers. So this is the attitude as a nation. We need to improve, we need to educate our farmer so that the abundantly available resources can be utilized. Otherwise, the researchers cannot do it in a laboratory. But how much biomass I can use in an industry? How much they can use? It is this farmer only who can sustainably and wisely can convert these resources into valuable product, which is either energy or anything else. So let me share. Continue. So organic waste to methane and carbon dioxide, application fuel, electricity generation, and example are these small scale biogas plants in rural areas, which is
some real areas they have, but at the large, in most of the country, it is not available. So another, this is actually the research-based technology up till now, even in advanced countries, but it can be utilized for the production of biofuel, algae-based biofuel production. It can give high oil yield, grows on non-arable land, and wastewater utilization for algae growth actually is necessary. So potential for biodiesel and bioethanol. And in rural areas and hybrid biomass solar systems can also be used. And it can integrate, it can produce 24 hours power generation. At the daytime, we can utilize solar power for the production of hydrogen and for electrolysis, and then combine it with the gasification system, which produce carbon monoxide and hydrogen. And then through the generator, we can light up our houses and our premises. Now, I would like to discuss the cost and the challenges associated with these technologies. Number one is biomass gasification. In Pakistan, the electricity production cost is 0.06 to 0.15, which is half around of the cost of energy being produced by the diesel. So it is in cost-wise, yes, it is half. But in Pakistan, what is the current status in Pakistan? Limited deployment with a few pilot plants. As I said, I visited some industries, but they just abandoned it. And the challenges are because it requires investment in gasification plants, and it has opportunities. It has a potential for rural electrification using agriculture waste. So this is the very nice solution for the rural area as well for biomass gasification. Second one is the pyrolysis for biochar and bio-oil. The cost is about 0.1 to 0.2. And in Pakistan, it is still at experimental stage, mostly confined to academic and research institutes. And the challenges are biochar production has potential for soil enhancement, but lack of infrastructure for commercial scalability. These are challenges. Number three is the anaerobic digestion, which has a huge potential in Pakistan. And as Dr. Hassan showed, Shenzhen biogas municipal solid waste plant. And I also visited China, Guangzhou, where I visited anaerobic digestion biogas plant. Actually, they were running a steel mill there. The fuel of the steel mill is biogas. They have a pig farm there. They have 1.4 million pigs there at their cattle farm, and they use the waste of the pigs to convert into biogas, and then at the result, the associated industry, their power production is being produced by that biogas, which is being produced from the waste of the 1.4 million pigs. So totally sustainable model they have adopted in terms of biogas plant. But in Pakistan, I think we need to implement industry, plus they have their own cattle farm, and both can sustain. And the current status in Pakistan is several small-scale biogas plants in rural areas you can find, but mostly used for cooking rather than electricity generation. This is the problem. So challenges potential for agriculture and municipal waste utilization is very huge. Need policy support for large-scale development. Now, government need to play their role here, actually. Algae-based biofuel, very limited, just R&D, because cost is very high. Next is hybrid biomass solar system. The cost is 0.08 to 0.18, and it is an emerging technology. Can be integrated with different systems
So it has a potential, and synergy between biomass and solar is promising for remote areas, needs better financing model and subsidies. And last one is the cellulosic ethanol production. Early stage projects, but no commercial production. So abundant raw material available, a high initial cost, and lack of technical expertise hinder growth. So these are some opportunities and challenges of the uh, technologies which I just mentioned in my PPT, and the current status in Pakistan. So key insight is the biomass gasification and anaerobic digestion are the most feasible and cost-effective options currently available in Pakistan. Pyrolysis and cellulosic ethanol production require significant research and investment to scale up. Hybrid biomass solar systems have immense potential for energy deficient rural regions, but their adoption is slow due to high initial cost. Algae-based biofuels remain the least developed due to their high production cost and lack of infrastructure. Pakistan needs a robust renewable energy policy with incentives, funding, and infrastructure to fully exploit these technologies for sustainable production, energy production. So, how we can implement the biomass-based energy in Pakistan? So, first of all, we need policy support and government incentives. Number two is public-private partnership. Number three is community engagement and capacity buildings. And number four, role of research institutes. Like Pakistan Academy of Engineering, they should use their influence to the some government bodies, some private public institutions, and to promote the biomass utilization from waste biomass mass utilization into a feasible and sustainable way. So these are some implementation strategies for Pakistan. What the benefit we can get, of course, reduced greenhouse gas emissions, rural development and job creation, energy independence and cost saving. And one more thing I would like to mention that in Pakistan, the most of the brick making facilities or industry, they are using the coal, direct coal combustion. Although they have modified, government have forced them to modify their combustion system, but even though the emission in the environment is quite high. So I think we need to force government, or government need to force them to adopt the waste biomass technologies for brick making facilities, so that's to reduce greenhouse gas emissions as well. So in currently, the Pakistan is following 2019 renewable energy policy, which is known as famous Alternative and Renewable Energy Policy 2009. This policy outlines the government's ambition plan to increase the share of renewable energy in the country's energy mix to 20% by 2025 and 30% by 2023. I think which is a very tough challenge for the Pakistani engineers or the people who are now currently associated with the power production. So 20% is a huge challenge. Let's see, Allah. And the key feature of alternative renewable energy policy is the number one is the target, set clear target for increasing renewable energy generation. Incentives provides various incentives to promote renewable energy projects, including feed-in tariffs, tax breaks, and simplified procedures. Capacity buildings emphasizes the importance of capacity building and technology transfer to support the growth of the renewable energy sector. Grid integration addresses the challenges of integration renewable energy into the national grid. Research and development promotes research and development in the renewable energy technology. And
these are the renewable energy policy currently implemented in Pakistan on papers, but I think on ground, the ground realities, everyone knows better. So, what is the way forward? Way forward is to unlock the full potential of sustainable biomass utilization in Pakistan. Needs to develop supportive policies and subsidies for biomass energy projects, invest in research and development and capacity building programs, encourage public-private partnerships for large-scale biomass projects, promote decentralized energy systems to leverage local biomass resources effectively. Sustainable biomass utilization can play a transformative role in Pakistan's energy sector, enhancing energy security, reducing emissions, and fostering economic development. Thank you very much. Thank you. Very, very elaborate presentation. Thank you, Shehzad. Thank you, sir. We just have 1 minute for a question, if you have any question. Otherwise, we move to the next presentation. ये सारी presentation जो हम अभी कर रहे हैं, ये अगर आपने देखा वो सारे के सारे हम एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं और अब आपको एक और टेक्नोलॉजी के ऊपर आपको होगा एक्सपोजर बायोमास गैसिफिकेशन पावर जनरेशन green energy by engineer M. Sarwar Arai. He is Chief Executive Officer of MISAC Group of Companies in Karachi. He has been on all technologies and he is also one of the proponents of indigenous development. I welcome Dr. Sarwar to come and share his presentation. Thank you so much, Dr. Brigadier Naseem Khan. I really appreciate your efforts for the country, for the nation, and you did a lot of work and promoting every time and appreciating the people's they are working for the country and the nation. This is my first time to have a platform to introduce myself. First, I want to give a small brief introduction. हम वो खामोश सिपाही हैं जो हम खामोशी से पाकिस्तान के लिए काम करते चले जाते हैं. I am graduate from University of Engineering and Technology in electrical engineering. My batch 84-85. I passed on 1989. So I didn't went to any government job or any other. I have a very clear visions in my life. From very initial, I want to do something very special for my country and for my nation. I'm thinking about a very depth knowledge and behind a vision, how my country and my country economy and my nation can take off. So this take off is very important. Now I am in conclusion at this moment. Inshallah, Pakistan economy will be taking off now in 2025, and Pakistan is going uplift now, and the nation will be going uplift now. We have to change tune up some things. So I will first talk on the basics. Then I will go to the normal routines. So this is very important. Every presentation, there are many seminars. I want to talk about some practical things. First, as you know, I already introduced. I got engineering from NIT. Then I started my own business: automotive diagnostic line, test line, inspection line, vehicle lines. So there was my vision. How my country can have less pollution from the vehicles. So I led the foundation of automotive engineering in University with my efforts. Nobody knows who did this job. I did from my pocket. I take two professors to visit the China. I show them the industries and I show the universities how industries are collaborated and integrated. This is very important. So then, Alhamdulillah, in NIT University Automotive Engineering
is started. Secondly, then I started work on energy. I did work first project in 1986 at UC level on wind turbine. Then I have a theme in my mind, so there should be a part of alternative energy in Pakistan. So I started my own R&D. Then 97, I went to Germany for the training on refurbishment of wind turbines. I am the first person in Pakistan who got the training on refurbishment of the wind turbines to bring the old wind turbines from Germany to cut down the cost of the country, so everybody can have the energy and the low cost energy. Unfortunately, that was my theme. So I was on the behind. There were so many people. They were working, but unfortunately, I was practical, but I was not so in that stage. So I was unable to perform on my best role for the development of the country. Thirdly, then I started the biomass gasification power generation. So I have the presentation of biomass gasification. उससे पहले मैं कुछ चीजें कहता चलो अपनी ज़बान में अच्छी लगती हैं. I heard many presentations. Dr. Shahzad and some other friends from the different universities. Everybody was talking about there are many challenges. There is no challenge. There is no obstacle in the Pakistan for the real working peoples. I made the model for the agriculture. I did successful. I have the evidences. I have the results. I am the first person who started manufacturing of wind turbines in Pakistan. I produced more than 450 wind turbines locally in Pakistan. I electrified the coastal line from Bambor to KT Bandar, Shah Bandar and many areas. I electrified more than 475 villages with the Akhan Building Planning Services, NRSP, BRSP, SCOPE and IUC and many other. With the PHE government, Balochistan, I worked with them for the rural development and for the water pumping and the PPL, many other organizations. I did this lot of work. So now these are the basics which I told you. Now we come to the biomass gasification. I started this on this biomass gasification power generation. Many in the Pakistan or internationally is some different story, but in Pakistan our focus is mostly biomass combustion. Combustion हम तो जलाना जानते हैं, जला के environment को खराब करना जानते हैं, और हम इंसान से जलता है, सोच से जलता है, हम तो हालात को भी जला देते हैं. तो ये हमारा पाकिस्तान का एक टेम्पो बन चुका है. मोस्टली हमारे जो कंसल्टेंट्स हैं, जो चीज़ें पेपर पढ़े भी जाते हैं, चीज़ें हैं, there is too much gap. The people, they have the presentation, they have the theoretical knowledge, they have the obstacles and challenges, and they don't know about what are the real figures for the in the country, what we have to do. In all the mostly presentation, we present the idea theme, which is little bit away from the practical aspects. So I make some bring my best to come to close the हमारा जो software है, basically इसका issue we are not updated with each other. Our universities don't know who is the industrial man that he can make the revolution in the country, and the person who can make the revolution in the country, he don't know which university has the facility for the biomass test lab and what they have the equipment, they have the funds for the development, for the research, but these funds are on the papers. No result, I think. I cannot say no result, but there will be results, but are not the beneficial for the country as I find from the other friends' presentations. But they have the facilities, but they need to be a practical model. This is very important. Without practical model, we cannot do anything. This is very important. उसकी मिसाल मैं यूँ देता हूँ, यानी मर्ज भी मालूम है
दवाई भी मालूम है, हर आदमी पूछता फिरता है दवाई खा रहे हो, वो मरीज कहता है हाँ मैं खा रहा हूँ। फिर हम पूछते हैं दवाई लगा भी रहे हो, वो कहता हाँ मैं दवाई लगा भी रहा हूँ। फिर पूछते हैं सेहत कैसी है, कहने लगे यार सेहत तो नहीं हो रही। फिर पूछा जाता है कि भाई दवाई पाबंदी से खा भी रहे हो, लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं पूछा कि दवाई कौन सी खिलाई जा रही है, कौन सी लगाई जा रही है। जो दवाई खिलाने वाली है उससे मालिश की जा रही है, और जिससे मालिश करनी थी वो खिलाई जा रही है। डॉक्टर भी ठीक है, दवा भी ठीक है, और मरीज भी शफा नहीं हो रही। हमारे मुल्क का यही हाल है कि हम सब कुछ है हमारे पास। We are the gold nation. We have the gold peoples with a gold approach, but the procedures accordingly they are not followed. मेरी बात समझ गए होंगे। हमारे पास सब कुछ है। हमारे पाकिस्तान में अल्लाह ने वो सलाहियत दी है, किसी मैं समझता हूँ किसी और कौम को या कंट्री के खित्ते को वो अवेलेबली जो एवरेज सब निकाला जाए, वी आर ऑन द टॉप। हमारी इकोनॉमी को जो सदियां लगी जिनको टेक ऑफ होने में, हम ये सदियां जो है सालों में तय कर सकते हैं अगर हमारी डायरेक्शन भी सेम हो। वही बात है कि गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए 10 आदमी आगे से धक्का दे रहे हैं, 20 पीछे से धक्का दे रहे हैं, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पा रही। गाड़ी से ये स्टार्ट नहीं हो रही, हमने ब्रीफिंग नहीं दी, हमने उनको डायरेक्शन तय नहीं करके दी। हमने कहा धक्का लगाओ, सबने उठा के धक्का लगाना शुरू कर दिया, किसी ने आगे से लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि हम सिंसियर कौम है ना, हमारा विजन है ना। हम तो ओबीडेंस है, हमें कहा धक्का लगाओ, हमने धक्का लगाना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने आगे से धक्का दिया, किसी ने पीछे दिया, किसी ने साइड से देना शुरू कर दिया। हम धक्के लगा रहे हैं, लेकिन हमारी इकोनॉमी स्टार्ट नहीं हो पा रही। हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो इंडस्ट्री को रन कर रही है, अगर उनसे हम एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, वो कहते हैं प्रूवन तो दिखाओ, प्रूवन टेक्नोलॉजी आपके पास कहाँ है। हम कहते हैं वो कहते हैं यार जो यूनिवर्सिटी से हमारे पास स्टूडेंट आते हैं उनको हम इंटर्नशिप पे भी रखना पसंद नहीं करते, इसलिए कि फ्रेश इंजीनियर्स हैं तो उनकी कोई वैल्यूज नहीं है। इसका मकसद ये कि हम प्लग एंड प्ले वाले इंजीनियर भी तैयार नहीं हो रहे। हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर वो क्वालिफिकेशन नहीं हुआ। हमारी यूनिवर्सिटीज ने जो प्रोडक्ट डिलीवर करनी थी, जो प्लग एंड प्ले थी, तो वो अगर पाकिस्तान से बाहर भी ब्रेन ड्रेन होके जा रही है, हमारी प्रोडक्ट जो है उनको बाहर जाके एफर्ट करनी पड़ती है, फिर दोबारा उनकी यूनिवर्सिटीज के अंदर क्वालिफिकेशन, वो सर्टिफिकेशन लेके फिर हम वहाँ काबिल इस्तेमाल होते हैं। इसका मकसद ये हुआ हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर भी बहुत बड़ा गैप है। उस गैप को हर आदमी नहीं समझ सकता। वो जिसके दिमाग में, जिसके ब्रेन के अंदर इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी दोनों होगी वो समझ सकता है। जिसके जहन में सिर्फ यूनिवर्सिटी होगी वो यूनिवर्सिटी को समझ सकता है, जिसके जहन में इंडस्ट्री होगी सिर्फ इंडस्ट्री को समझ सकता है, वो यूनिवर्सिटी को नहीं समझ सकता। और हमें दोनों चीजों को जो समझेगा वो आपको दवाई तजवीज करेगा कि कौन सी दवाई खिलानी है, कौन सी लगानी है। तो मेरा मकसद आपको बताने का ये है कि सबसे पहले हमारी यूनिवर्सिटीज, हमारी इंडस्ट्रीज को सिंगल पेज पे आने की जरूरत है। हमारे बच्चे यहाँ इतनी एफर्ट करके इतनी रिसर्च पेपर लेके आते हैं, हमारे प्रोफेसर, हमारे टीचर, हमारे पीएचडी लोग इतना अच्छा डिग्रियां लेके आते हैं, पढ़ते हैं, काम करते हैं, और हमारा पैसा लगता है, कंट्री का पैसा लगता है, लेकिन अभी तक वो प्रोडक्ट डिलीवर नहीं कर सकते, क्योंकि उनका वो मोटो ही नहीं है प्रोडक्ट डिलीवर करना। वो प्रेजेंटेशन देना है, प्रेजेंटेशन देते रहते हैं। मैं आज आपके सामने पाकिस्तान, गवर्नमेंट पाकिस्तान, हमारे बड़े, जहां तक भी मेरी आवाज जाए, मैं अपने मैसेज को इस प्लेटफॉर्म से, उस्मान इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म से, जिन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम हम इसी यूनिवर्सिटी के अंदर इंडस्ट्रीज के लोगों को और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को, जो लोग आए उनके सामने एक प्लान रखा जाए, एक प्रोग्राम रखा जाए, जिसके अंदर हम अपनी इकोनॉमी को टेक ऑफ कर दें। हमारे स्टूडेंट जो हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है उसको हम होल्ड करके पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर उसका एक रोल परफॉर्म कर सकें। और ये मेरा एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैसेज था
अब मैं थोड़ा सा आपको प्रेजेंटेशन की, तो मेरी प्रेजेंटेशन उस टाइप की प्रेजेंटेशन नहीं होगी कि कोई रिसर्च डेवलपमेंट की, रिसर्च की प्रेजेंटेशन नहीं होगी, लेकिन मेरी प्रेजेंटेशन एक प्रैक्टिकल मॉडल होगा और प्रैक्टिकल चीज होगी। और इम्प्लीमेंटेशन के लिए ना तो मैं ये कहूँगा कि जी हमारे पास हम किसी गवर्नमेंट इदारे से हम कहें कि जी आप आ जाए ज्वाइन हमारे हैं, क्योंकि उनका मोटो अलग है, गवर्नमेंट का, प्राइवेट सेक्टर का अलग मोटो है। जो हमारे, मैं प्रेजेंटेशन में ये भी देख रहा था कि बहुत सारी पॉलिसीज के इशू भी आए कि जी पॉलिसीज नहीं बनी हुई। सर मसला ये है, हमारे यहाँ जो पॉलिसीज मेकर है ना, उनके पास इंडस्ट्रीज का एक्सपीरियंस नहीं है। आप मेरी बात को, पॉइंट्स को नोट कर लें। जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उनके पास इंडस्ट्रीज का एक्सपीरियंस नहीं है। अगर इंडस्ट्रीज वाले उसमें इन्वॉल्व भी हो जाए, फिर एजुकेशनल का उसमें रोल नहीं है, यूनिवर्सिटी का रोल नहीं है। जो पॉलिसीज तो वो काम करेंगी जिसमें हमारी यूनिवर्सिटीज पढ़े लिखे लोग आए, प्रैक्टिकल लोग आए, और फिर इंडस्ट्रियल मैन आए, और फिर चौथा पौवा जो है वो गवर्नमेंट है। एक चारपाई के, एक कुर्सी के 4 लेग्स है। वो कुर्सी उस वक्त तक कायम रहेगी जबकि उसकी चारों लेग्स इक्वल बैलेंस वे में इंटीग्रेटेड होंगी। अब हमारे यहाँ जो पॉलिसीज तो बनती रही हैं, लास्ट 77 ईयर से हम पॉलिसियां बनाते जा रहे हैं, और पॉलिसियां बना के टाइम भी वेस्ट करें, उस पॉलिसियों के ऊपर इन्वेस्टमेंट भी हो रही है हमारी, लेकिन आज तक वो पॉलिसियां काम नहीं करती, काम नहीं कर पा रही, इसलिए कि हम सक्सेसफुल रिजल्ट ले नहीं सके। अब जो 3 टांग वाली कुर्सी पे बंदा बैठा होगा वो कभी भी ज़हनी तौर पे कंफर्टेबल होकर काम नहीं कर सकता। क्या ख्याल है, कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। अगर उसकी 2 टांगें कुर्सी की और निकाल दी, जैसे 2 टांग वाली कुर्सी पे उसको बिठा दिया जाएगा, वो और अनकंफर्टेबल होकर काम करेगा। वो उसको कुर्सी बचाने के चक्कर में बेचारा लगा रहेगा, मेरी कुर्सी गिर नहीं जाए, वो काम ही नहीं कर सकेगा। वो पॉलिसी कैसे काम करेगी? सर मैं आपको थोड़ी सी, अगर एक टांग पे खड़ा होगा वो ज्यादा मुश्किल में हो जाएगा, शायद वो फिर भी आसानी से हो जाए। एक टांग वाली कुर्सी जो है ज्यादा कंफर्टेबल होगी, उसको पता होता है यार एक ही टांग है, मैंने एक ही टांग पे खड़े होना, वो फिर भी थोड़ा सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन 2 टांग वाली कुर्सी, 3 टांग वाली जो है ना, वो सक्सेसफुल है। हमारे मुल्क के अंदर अलमिया ये हुआ कि हमारी कुर्सी की टांगें टूट गई हैं, तो वो लेग्स को रिपेयर करना एक बुनियादी चीज है। और दूसरी बात है कि हमारे यहाँ जो आइन साजी होती है वो उससे पहले इंसान साजी जरूरी है। मेरे सारे, मैं मफहूम दे दूं, जो इतनी मेरी गुफ्तगू थी मैं उसको एक निचोड़ के अंदर, क्योंकि इतनी सारी बातें याद नहीं रहेंगी, लेकिन मैं थोड़ा सा उसको सफूफ की शक्ल में दे दूं कि जो पॉलिसियां बनती हैं यानी वो इंसान बनाते हैं हमारे, ठीक है, लोग बनाते हैं पॉलिसियां, और उन लोगों का एक्सपीरियंस किसी और चीज का होता है। यानी तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, तू मोहब्बत है किसी और के और की तुझे ले जाता कोई और है। तो हमारे यहाँ पॉलिसियों के अंदर भी यही हाल है। तो हमें सबसे पहले जो बुनियादी चीज है, इंसान साजी होगी तो आइन साजी चलेगी। मेरी बात समझ गए होंगे आप। जब तक वो आइन साजी जिसमें इंसान साजी नहीं हुई, वो आइन साजी भी काम नहीं करेगी। या कोई किसी को क्वेश्चन हो तो मैं उसका जवाब दे दूं। वो पॉलिसीज जिनके अंदर इंसान साजी के बाद आइन साजी होगी, वो पॉलिसियां काम करेंगी, और जिन पॉलिसियों के अंदर आइन साजी होगी, इंसान साजी नहीं होगी, वो कभी पॉलिसियां काम नहीं करेंगी। हमारे मुल्क में, हमारी कौम के अंदर, हमारे सिस्टम के अंदर यही होता आया है। मेरा ख्याल है 2025 में हमें अपनी डायरेक्शन को चेंज करना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा, अपने व्यूज को बदलना होगा, अपने वे ऑफ लाइफ स्टाइल से लेकर इकोनॉमी और सियासत और सब चीजों को बदलना होगा। जब तक हम नहीं बदलेंगे, हम पाकिस्तान को नहीं बदल सकते। हमारे जितनी प्रेजेंटेशन या सेमिनार होते हैं वो दूसरों को बदलने के लिए दिए जाते हैं, खुद बदलने के लिए नहीं होते। हम अगर खुद बदलने वाले होंगे तो हमारी बात की तासीर और हमारी चीजों में फर्क होगा बहुत। हम दूसरों को बदलने के लिए काम कर रहे होते हैं। इस पूरे सिस्टम के अंदर हमारी पॉलिटिक्स से लेकर पूरा सिस्टम, पूरे इदारे के इदारे सारे के सारे दूसरों को बदलने के लिए एफर्ट में लगे हुए हैं, और हम अपने आप को बदलने के लिए कोई बंदा भी किसी परसेंट पे भी काम करने के लिए तैयार नहीं है। हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो दूसरों को एजुकेट करने में लगी हुई है, ये भी एक पार्ट है। और हमारे
जो दूसरे लोग हैं वो यूनिवर्सिटी को एजुकेट करने में लगे हुए हैं, जबकि यूनिवर्सिटी तो खुद एजुकेशन पे लगी हुई है। तो हमारी थोड़ी थोड़ी चीजों को ट्यून अप करने की जरूरत है। जैसे गाड़ी की एमिशन की ट्यून अप होकर एफिशिएंसी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है, उस गाड़ी का CO2 SCR NOx लैम्डा वगैरह उसको एडजस्ट कर दिया जाए, गाड़ी की फ्यूल रोड ट्रांसपोर्ट एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी। ऐसे ही हमारे सिस्टम के जो लॉसेज हैं बेसिकली ट्यून अप करना हो रहा है। अभी हम ट्यूनिंग की बात तो मैंने पूरी कर ली है, अब हम बायोमास गैसिफिकेशन पावर जनरेशन ग्रीन एनर्जी की बात करता हूँ। तो इसके अंदर सबसे पहले जो बहुत सारे दोस्तों ने इसके ऊपर बात करती है, मैं थोड़ा इसको उर्दू में भी लेके चलूंगा और साथ इंग्लिश भी रहेगा। और बायोमास गैसिफिकेशन पावर जनरेशन जो है, कुछ दोस्तों ने यहाँ पर सम फ्रेंड्स दे शो द 0.15 रुपये या 15 रुपये किलो वाट के हिसाब से एनर्जी की बात की है। तो इसमें जो है बायोमास गैसिफिकेशन से वी कैन गेट अ फ्री इलेक्ट्रिसिटी, 100% फ्री इलेक्ट्रिसिटी, 100% free electricity. Why? How? Because the biomass gasification is a process by thermal decomposition, or we can get a free electricity. We can get a free electricity. So, free electricity. This free electricity, how we can get the payback of the plant? We have a lot of byproducts. First of all, we have the ash, the organic fertilizer. From 1.5 kg rice husk, we can get a 1 kilowatt energy. 1 kilowatt hour energy we can get from a 1.6 kg of rice husk. 45% from that we can get ash. Ash की जो मेरे दोस्त ने भी यहाँ प्राइस बताई कि 100 रुपए किलो तो खाक भी मिलती है मार्केट के अंदर। हम तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर दे रहे हैं, हम तो खाद की बात नहीं कर रहे, हम उससे ऊपर की बात कर रहे हैं। The organic fertilizer we have the actual that fertilizer can be produced from the biomass gasification because we are not working on combustion. This is the gasification process. In absence of oxygen, the materials after gasification they have the quality, they have the remaining characteristics. These characteristics can have a byproduct. I am talking about the byproduct. So the ash that can be sold at 200 rupees per kg. 10 रुपए किलो वाला कचरा, 10 रुपए kg rice husk, we can convert into 200 rupees kg. And biochar charcoal has the market value 400 rupees per kg. So we can convert 10 rupees kg material into 400 plus 200, 600 rupees kg. हम 10 रुपए किलो वाला कचरे को 600 रुपए किलो में कन्वर्ट कर दें। People they think this is not ये कंफर्टेबल नहीं। हम कहते हैं 400 रुपए किलो, आप 400 रुपए किलो नहीं, हम कहते हैं 300 रुपए किलो। क्या हम 10 रुपए वाले कचरे को 300 रुपए किलो में कन्वर्ट कर देते? बिजली फ्री में है, इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, तो क्या हमारी पाकिस्तान की इकोनॉमी टेक ऑफ होगी या नहीं होगी? हमारी इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हमारी बिजली चाहिए। हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री नाउ द पीपल दे आर वर्किंग ऑन कंबस्शन। वो भैंस के गोबर को पैलेट्स बना के जलाया जा रहा है। दोबारा अगेन वी आर वर्किंग ऑन द कंबस्शन, और वो राख बना के उस राख से फिर दोबारा एनवायरमेंटल इशू पैदा किए जा रहे हैं। वो खाक भी हवा में उड़ती रहे, जो कि हवाओं में उड़ती रहे, वो खाक भी हमारे लिए हेल्थ और बीमारियां और मसाइल पैदा करे। और फिर जो बायोचर चारकोल है, हमारे घरों में चूल्हा जलाने के लिए गैस नहीं है, वो बायोचर चारकोल जो है दैट हैव द कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू 780 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर कुकिंग फूड। हम वो घरों में सप्लाई कर सकते हैं। रिमोट एरिया जहाँ जंगलों को जलाया जा रहा है डायरेक्ट, वो चारकोल उनको एज ए गिफ्ट के तौर पे भी हम भेज दें, वहां से कचरा लेते रहे उनसे, तो वी कैन ग्रो, माय कंट्री कैन ग्रो, माय एग्रीकल्चर सेक्टर विल ग्रो, एवरीबॉडी विल ग्रो फ्रॉम माय मॉडल। सो उसके बाद अगर आप आ जाते हैं गैसिफिकेशन के, तो सारे माशाल्लाह पहले दोस्तों ने भी दिया है, मैं तो उसकी बुनियादी चीजों पे बात करूंगा, क्योंकि ऑल द प्रोफेसर, डॉक्टर्स एंड PhD पीपल, सो मेनी लिसनर्स, दे नोज एवरीथिंग। तो ये जो गैसिफायर हमारा है दैट हैव द 400 to 600 डिग्री सेंटीग्रेड
pyrolysis, thermal decomposition. We have the product ash, we have the product 30%, we have the charcoal, and we have the heating and cooling through hot water chiller. We can reduce our cost in the air conditioning, heating and cooling. We can make our industries more comfortable environment for working people. They can have the more output, productive. वो मशीनों के अंदर जहाँ आपको टेम्परेचर मेंटेन करना है, एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट अगर आप दे देंगे उसी हीट से कूलिंग करके, तो आपकी इंडस्ट्री जो है वो वर्कर जो है दिल लगा के काम करेगा. उस बिजनेसमैन को भी फायदा मिलेगा और उसको उसके बेनिफिट वो ट्रांसफर करेगा. अभी तो वो सैलरी देते हुए वो सोचता है कि मैं इसकी खाल कैसे उतार दूं. इसलिए कि इंडस्ट्री के अंदर हमारे लॉसेस बहुत ज्यादा हैं. मैं प्रैक्टिकल मॉडल की बात कर रहा हूँ इस वक्त, इसलिए मेरी बातें बहुत सारी प्रेजेंटेशन से हटकर होंगी. तो मैं आई थिंक मुझे आप इस मेरी गुस्ताखी को माफ कर देंगे. थोड़ी सी बात है तो मेरी इस कमजोरी को आप लोग मेरा ख्याल इग्नोर कर देंगे. सर, गैसीफायर के बाद मैंने गैस कंडेंसेशन की बात कर रहा हूँ, गैस कूलिंग कर रहा हूँ. उसमें 600 डिग्री सेंटीग्रेड को जब मैं 80 to 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे लाऊंगा हॉट वाटर चिलर के लिए, मेरी इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्री को 9 यूनिट के लिए गर्म पानी मुफ्त में मिल गया, फ्री में. सर, जब पानी फ्री में मिल जाएगा आपको गर्म पानी, तो आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो बॉयलर लगा के भैंस का गोबर को पायलट बना के मेमन बोर्ड से उठा के आप अपने बॉयलर को मॉडिफाई करके जला रहे हैं और फिर उसकी हीट को अनसेफ अनसिक्योर्ड तरीके से आप उसको मैनेज कर रहे हैं. हम तो आपसे गर्म पानी हॉट वाटर फ्री की बात कर रहे हैं. इसके सर कोई पैसे नहीं है, ये गर्म पानी फ्री में मिलेगा. आपको कंडेंसर लगाना है, आपके पास एक तो गैस मिल गई गैस इंजन चलाने के लिए फ्री में, दूसरा आपको हीटिंग कूलिंग फ्री में मिल गई, तीसरी मैंने आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की बात की है वो फ्री में मिल गया आपको, और चौथा बायोचर चारकोल भी आपको फ्री में मिल गया. अब प्लांट की कॉस्ट पे बैक जो है हमने वो निकाल दी है 2 प्रोडक्ट से बायो से, और हमारे पास जो 35 रुपीज का जो गैस का हमारा पावर प्लांट चल रहा है, जो कि लोड शेडिंग भी हो रही है हमारे इंडस्ट्री के अंदर. हम तो आपको फ्री में गैस की बात कर रहे हैं. हम कहते हैं आप हमारे साथ बैठे, हम आपको 100% बिजली फ्री देते हैं. ये ख्वाब नहीं है, ये तामीर है. जो पाकिस्तान हमारी कौम पिछले 77 ईयर से ख्वाब देख रही थी, उसकी ताबीर है ये. हम फ्री एनर्जी की बात करते हैं. मैंने जब एनर्जी के अंदर मैंने कदम रखा, मेरी कंपनी का लोगो था फ्यूल फ्री एनर्जी. एक जर्मन ने मुझसे पूछा कि ये फ्यूल फ्री एनर्जी सिस्टम की कास्ट की आप बात नहीं कर रहे. मैंने कहा जी, सिस्टम की कास्ट जब बात करते हैं ये फ्यूल फ्री है, ये फ्री एनर्जी नहीं है. सोलर एनर्जी फ्री नहीं है, विंड एनर्जी फ्री नहीं है, फ्यूल फ्री है. लेकिन मैं जिस एनर्जी की अभी बात कर रहा हूँ आपको 77 ईयर के बाद पाकिस्तान की का सफर तय करने के बाद मैं जिसकी बात कर रहा हूँ आपके साथ, ये फ्री एनर्जी है सर. ये फ्री एनर्जी है, ये फ्यूल फ्री नहीं है. इसका फ्यूल बायोमास है और इसकी एनर्जी फ्री है. मेरी इंडस्ट्री को मैसेज पहुंचा दिया जाए कि फ्री एनर्जी है, और इसकी जो कॉस्ट पे बैक है वो इसकी बाई प्रोडक्ट से है. जिसमें आप स्मार्ट सिटी का प्रोग्राम है, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स है, हमारे रिमोट एरिया में हाउसेज बन रहे हैं. हम घरों के घर तो बना रहे हैं कौम को आबाद करने के लिए, लेकिन उन घरों में कौन रहेगा बगैर आपके उसके. हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं कैमरे सिक्योरिटी लगा के. मैं आपको स्मार्ट सिटी का प्लान देता हूँ, प्रोग्राम देता हूँ पाकिस्तानी कौम को कि स्मार्ट सिटी क्या है. हम आपको फ्री इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, हम आपको गैस देते हैं, आपको पानी देते हैं. उसी के थ्रू वाटर डिसैलिनेशन प्लांट चला के आप खारे पानी को मीठा करके आप कौम को फ्री पानी दे सकते हो सब्सिडी रेट के ऊपर. इस कौम को गैस फ्री में दे सकते हो सब्सिडी रेट के ऊपर. वो फ्री आपके पास पाइपलाइन है. 10 रुपए किलो वाली चीज है, वो तो वैसे ही आपको 400 में कन्वर्ट होके मिल रही है. तो अगर आप फ्री भी दे देंगे चीजें, फिर भी कुछ आपका नहीं जाएगा. तो ये मेरा पैगाम. इसके अंदर मैं बेसिक बुनियादी चीजें जो आपको काफी चीजें तो बता चुका हूँ. ये रॉ मटेरियल्स आएगा, फिर उसके बाद ये पायरोलाइसिस है, फिर आपका इसमें स्टोरेज है, इसके बीच में बफर बनेगा हमारा जो रॉ मटेरियल वगैरह है. फिर गैसीफायर में जाएगा, गैसीफायर के बाद कूलिंग कंडेंसर जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ ऑलरेडी, और गैस इंजन है. गैस इंजन से आप गैस इंजन भी चला सकते हैं.
आप इसे घरों में खाना पकाने के लिए गैस चूल्हों को भी दे सकते हैं, पंप कर सकते हैं। और उसके बाद आप बॉयलर इंडस्ट्री, हमारी इंडस्ट्री में जो बॉयलर लगे हुए हैं उनको भी हम रन कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने कंपोनेंट्स का जिक्र किया है, मेरा ख्याल है सभी लोग समझ चुके हैं। मैंने गुफ्तगू इस अंदाज से की है कि जिसके अंदर मेरी सारी चीजें ऑलरेडी कवर हो चुकी हैं। नेक्स्ट, ये सर बायोमास गैसिफिकेशन प्लांट है। ये हमारे पास, हम सोलर के प्लांट की बात करते हैं, विंड टर्बाइन की बात करते हैं, हमें बहुत बड़ी जगह चाहिए। 100 किलोवाट के प्लांट को लगाने के लिए आपको 35 फीट बाय 45 फीट जगह चाहिए। कितना सर? 30, चलो आप 35 फीट लगाया, 50 फुट भी लगा लें। 100 किलोवाट की जनरेशन के लिए कहीं भी लगा सकते हैं, यूनिवर्सिटी में लगा सकते हैं, आप किसी जगह भी लगा सकते हैं, स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री में लगा सकते हैं, बिल्डिंग की छत में लगा सकते हैं, आप कहीं भी लगा सकते हैं। 1 मेगावाट को प्लांट को चलाने के लिए आपको कोई 60 बाय 80 फीट जगह चाहिए, 100 फीट जगह चाहिए 1 मेगावाट के लिए। एक स्मार्ट स्पेस चाहिए आपको, बड़ी जगह नहीं चाहिए। और मेंटेनेंस नहीं चाहिए आपको। मेंटेनेंस इस सेंस में नहीं चाहिए कि जो भी हमारे पास ये जो सिस्टम चलेगा बायोगैस प्लांट का, ये एनर्जी भी अपनी इसी से ले रहा होगा। ये फीडबैक कंट्रोल है। हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट समझते हैं फीडबैक कंट्रोल क्या होता है। इसी में से एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उसी से सेल्फ सस्टेन होगा। अब सवाल पैदा होता है कि सिस्टम चलेगा कैसे। मैं इसका भी रोशनी बताता चला जाऊं कि सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए हमें 20 मिनट एनर्जी चाहिए। 100 किलोवाट के प्लांट को चलाने के लिए 10 किलोवाट या 15 किलोवाट हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। हमारे पायरोलाइसिस इंडक्शन रिएक्शन को या पायरोलाइसिस थर्मल डिकम्पोजिशन सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए हमें बिजली चाहिए। उसके बाद हमारा गैसेज आ जाएंगी, हमारे पास प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। सिस्टम ऑटोमेटिक हमारा स्विच ओवर हो जाएगा, सिर्फ सस्टेन एनर्जी पे, सेल्फ सिस्टम पे, सेल्फ प्रोपाइल सिस्टम होगा, उस पर सिस्टम काम करता रहेगा। और इंजन के लिए आपको छोटी सी कमरे की जगह चाहिए। 1 मेगावाट का भी है तो आपको 40 बाय 30 फुट जगह चाहिए या 40 फुट जगह चाहिए। तो आम नॉर्मली जो हमारी इंडस्ट्री के अंदर, मैं इसमें थोड़ा सा और वजाहत करता चला जाऊं, हमारे बहुत सारे दोस्तों को क्वेश्चन आएंगे बहुत सारे कि यार हमारे पास तो बायोगैस बनाने के लिए राइस हस्क की बात कर रहे हैं आपने, बाकी कोई बात तो की नहीं आपने। सर मैं सवालों के जो सवाल पैदा होने वाले हैं उससे पहले मैं जवाब दे देता हूँ। अगर फिर भी किसी का सवाल रह गया तो उसके जवाब दे दूंगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहली बुनियादी चीज है जो मैं जिस एंगल से चीजों को लेकर चल रहा हूँ पाकिस्तान के लिए और काम करना चाहता हूँ, सबसे बुनियादी चीज है कि एक है हमारे पास एग्रीकल्चर वेस्ट राइस हस्क। राइस हस्क का इसलिए हमने जिक्र किया है कि एक तो इसको एनिमल नहीं खाते, जानवर नहीं खाते, इसको इंसान भी नहीं खाते, इसको कोई मखलूकात नहीं खाती। पोल्ट्री फार्म के अंदर नीचे बिछाने के लिए इस्तेमाल होता है या कोई गत्ता बनाने के लिए, चिप बोर्ड बनाने की कुछ इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। मोस्टली हम इसको जलाते हैं, जिसके लिए पंजाब पूरे की इन्वायरमेंट को 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए स्कूलों में छुट्टियां कर दी जाती हैं, ऑफिस बंद हो जाते हैं, अस्पतालों में रश लग जाता है। और लेकिन किसी का भी इधर ध्यान नहीं है कि भाई इसके ऊपर काम किया जाए। हम छुट्टियां कर लेते हैं, हम उसके ऊपर लेक्चर अटेंड कर लेते हैं, हेल्थ के ऊपर हम लेक्चर देना शुरू कर देते हैं कि इस धुएं से बचा कैसे जाए, लेकिन धुएं को बंद करने के ऊपर कोई काम नहीं करता कि धुआं कहां से आ रहा है, इस धुएं को ब्लैक बोर्ड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई बात नहीं होती। और अब मैं थोड़ा सा ये चीजें मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें राइस हस्क के अलावा हमारे पास वो वेस्ट जो खेतों में कपास है, सनफ्लावर है, सोयाबीन है, जो भी चीजें उसका कचरा जो निकलता है, पंजाब साइड में भी जो सिंध के अंदर भी खजूर के बागात हैं उसका कचरा है, ये सारे का सारा बायोमास है। और राइस हस्क के अंदर तो जो कि गोल्ड है उसमें बाइचर बहुत हाई क्वालिटी का मिलेगा आपको। उसमें से राइस हस्क वेनेगर है जो कि $400 पर लीटर इंटरनेशनल मार्केट है। हमारे पास सोना है, हमारे पास वो वाला गोल्ड नहीं है। पाकिस्तान के अंदर ब्लैक गोल्ड मौजूद है। हम आपको ब्लैक गोल्ड की बात करें, बाकी जो खजाने हमारे पास पड़े अल्लाह ने हमें दिए उनका तो जिक्र ही नहीं कर सकता मैं, वो इतने बड़े खजाने हमारे पास है। मैं सिर्फ ब्लैक गोल्ड की बात कर रहा हूँ। ये बायोमास गैसिफिकेशन पावर जनरेशन इज अ ब्लैक गोल्ड टेक्नोलॉजी। ये मेरा मैसेज इसलिए मैंने दे दिया ताकि मेरे मैसेज को इंडस्ट्री भी सुने और हमारे यूनिवर्सिटी भी सुने, हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तान भी सुने, हमारे वो इदारे जो पॉलिसियां बना रहे हैं वो भी सुने। जब तक हम सारे एक दूसरे के साथ
हम ब्रेन हमारा सिंक्रोनाइज नहीं होगा, हम जैसे टर्बाइनों को सिंक करने के लिए ग्रिड के अंदर फ्रीक्वेंसी वोल्टेज का सही होना जरूरी होता है, ऐसे ही हमें टेक्नोलॉजी के अंदर सिंक करने के लिए हमारे ब्रेन की फ्रीक्वेंसीज को मैच करना जरूरी है। जब तक हमारी फ्रीक्वेंसीज, हमारी यूनिवर्सिटीज की, हमारी पॉलिसी मेकर्स की, हमारी इंडस्ट्रीज की फ्रीक्वेंसीज सेम नहीं होती, हम कभी भी अपने नेशनल ग्रिड इकोनॉमी के अंदर वो रोल परफॉर्म नहीं कर सकते। अब वो ग्रिड कौन सा है? वो ग्रिड हम एज ए बहसीत कौम है, हम कौम बने नहीं है, हम कौम बने नहीं है। कौम तो वो होती जिसका मकसद देखो, हमारे मकासद अलग-अलग हैं, हमारे विजन अलग-अलग है, हमारी अप्रोच अलग-अलग है। मैं बहुत सारे मैसेज बहुत ढके छुके अल्फाज के अंदर मैंने दे दिए हैं। मेरा ख्याल है इसमें बहुत सारे लोगों को, दानिश्वरों को और बहुत सारे हमारे ब्रेन लोगों को समझने के लिए इतना ही काफी है। तो उसकी गहराई में उतरते चले जाएंगे, ये हम दलदल में अंदर चले जाएंगे। वो खजाना अंदर जमीन के अंदर वो मौजूद है, वो ख्यालात के अंदर मौजूद है, वो यूनिवर्सिटियों में छुपा हुआ है, वो आइडियाज में छुपा हुआ वो खजाना मौजूद है। एक मैंने काम और किया है जो हमारे शॉर्ट वाले बहुत सारे साथियों ने एरोबिक यानी बायोगैस प्लांट, एनिमल वेस्ट से, काऊ डंग से गैस बनाना, उसके ऊपर भी बहुत सारे साथियों ने बात की है। हमारे ब्रिगेडियर नसीम साहब, ही इज द फाउंडर ऑफ इन्वेंशन, इन्होंने बहुत बेसिक लेवल पे चीज़ों को हमदर्द यूनिवर्सिटी के अंदर भी और बहुत सारी एफर्ट करें। बायोडीजल की बात भी हुई, बायो गैस की बात भी हुई, बहुत सारी चीज़ों की, जेट्रोफा की बात भी हुई। और मुझे खुशी होती है वो अल्फाज सुन के जिसके ऊपर कोई 30-35 साल पहले हम सोचा करते थे। और मैंने प्रेजेंटेशन से ये भी देखा था ये 35 साल के बाद भी हम वही खड़े हैं। मैं 2025 में आके भी वो अल्फाज सुन रहा हूँ, उसके अंदर भी हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं। हमारे पास उसके अंदर भी बायो गैस के अंदर भी हमारे पास चैलेंज सुनने में आ रहे थे प्रेजेंटेशन के अंदर, और बायोडीजल के ऊपर भी हमें चैलेंज नजर आ रहे थे। पॉलिसी के अंदर भी मैंने बहुत सारे दोस्तों की गुफ्तगू सुनने चैलेंज की बात की गई, पॉलिसीज की बात की। सर मैं आपकी इतला के लिए और मजीद थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करता हूँ कि द बायोमास गैसिफिकेशन इज आल्सो को-मिक्सचर ऑफ काऊ डंग। There are two types of technology, wet technology and dry technology. From the wet technology is the biogas, and from the dry technology is the biomass gasification power generation. We must have to be very clear two concepts of the energy production. Mostly our people, when we are talking about the dry technology, they at the end they will raise the question, we have the biogas. Again we are thinking, because our mind is drained out, we are on the other page. What we are doing, what we are thinking, there are two pages. Even in our life, what we are talking and what we are doing, there is quite difference. What we are thinking, what we are researching is also a difference. वो इसके अंदर सर जो काऊ डंग है, we can use as a cow dung 50% of the ratio. I have the design of the plant. I can deliver the plant from 1 megawatt to 10 megawatt, maybe 50 megawatt for the biomass gasification power generation with the mixture of rice husk, with the mixture of agriculture, with the dry cow dung. Sir, the dry cow dung. After gasification, we can have the free electricity. This is a 55,000 megawatt. How much? 50,000 megawatt. We have the potential for the biomass gasification power generation in Pakistan. While our shortfall is only 25,000 megawatt. Maybe I am right or wrong. So we have we burn every year 144 billion ton of agriculture waste by the combustion. What a nation, what a country have what a potential is available, and we are not using, we are focusing on combustion. For the international funding is also a problem for us, because our mostly attention is toward the combustion. We believe on combustion, and the international funding is waiting for the development for the nation, universities, industries and everything. But
They are looking for the organic supply chain, for the food, organic fertilizer, organic meat, organic vegetables, organic fruits, and everything the world is looking towards Pakistan for the organic. The organic revolution will be only possible when we will adopt the technology for the gasification, not by combustion. Combustion, all the characteristics of the materials, whatever it is material we are using for the combustion, for the furniture, if we have waste furniture, waste wood, or what we are using for the producing of technology, for producing the electricity, the technology, that will be not recycled. The technology I am talking, the recyclable, the organic fertilizer, if you have the more shortfall of energy, that ash of the after gasification is also fuel again. That can be combusted in the boiler as well, again, in the form of powder. And we can produce the biochar as a bricks, and easy to transport and easy to use for the bio burners are available in the market, but biofuels are not there properly. After cow dung, the pellets would are produced from the cow dung pellets. That can have the more characteristic values of the energy. 1.2 kg of the cow dung pellets can produce a 1 kilowatt energy. This is also more and most efficient. So the cow dung we are using for the biomass, biogas, is a very critical subject now in advanced technology. So mostly our friends, they are thinking, not thinking, but I can explain. I'm not working about only our thinking procedure or the practical model. The biogas, animal waste, the gas, that needs a controlled temperature environment for the continuous gasification. That is difficult to manage because of the climate change. The aerobic mostly designs are in the earth, so there is the water in the difficult to manage the temperature. Now we have to switch over the dry technology. We have to come to the conclusion about the net result for to boost the economy of Pakistan. So we must have to adopt the dry technology. That cow dung is available in the villages. For the small villages, we can have to some many NGOs are working in the funding. I also invite to the international funders for the Pakistan. They must have to investment on the green energy, and this green energy can be produced from the agriculture, or that this energy can now produce organic fertilizer. We can fulfill the requirement of the organic organic meat, organic milk, organic food, organic vegetable, organic fruits. We can fulfill the requirement of the international market. We have a lot of export. We can increase the export. We can turn the economy of Pakistan. We can turn the direction of Pakistan. We can have a right startup of Pakistan economy in 2025. Today is 21 December of 2024. I am in the institute, the Swan Institute of Technology. My message, I am thinking, I have the vision to turn the direction of Pakistan after few days. In 2025, we are on the border, we are on the end of the closing to 2024, and we are at the startup of 2025. I invite the concerned authorities, their policy maker, to promote the green energy Pakistan. I can perform the role without any money. I can perform my services, I offer my services for the free, I offer my experience freely without any single penny, taking single penny. I don't need any salary from any organization or any authority.
I can perform the role in the economy of Pakistan free with my vision, with my experience, with my knowledge, and with my practical approach. I have all the practical models as well in agriculture sector. Brigadier Naseem Khan visited my pilot project when the wheat few months before. So he knows about the practical. I also invite people, say, if they want to visit my project agriculture at Sindh Coastal Highway, Sarwarabad, my location. You can put the location Sarwarabad Agri Farm, so he will tell you the location. We are growing the organic hybrid line chili, Thailand chili, Turkish chili, which we were importing to the country. Now this chili is going to export from Pakistan. We can have the expertise for this also. My son is civil engineer, Mr. Mohsen Sarwar. He is professional doing work very hardly day and night. He made a very beautiful model. I invite the people, if they want to learn something about the agriculture development, for the practical models, the students, they have the parent, they have the land of the, they have the piece of land. They can grow the agriculture, organic foods. They can produce organic vegetable even on their top roofs and houses, and green energy, green environment everywhere, and make the life green. Please next. The biogas gasification, I already told all the things. The biomass gasifier have the fuels, many all type of agriculture waste, and we have the gas. So mostly my approach is towards the practical model. But these are the presentation is like a document, like a research paper, because I am not a researcher. I am a practical person, so I already did this research. I am not a doctor. I am an engineer, but that engineering I didn't digested in last working of 35 years. मेरा कहने का मकसद ये कि मैंने डॉक्टरी नहीं की है. मैंने 35 साल से जो इंजीनियरिंग पढ़ी थी, अभी तक उसी को ही मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाया. वो मेरे प्रैक्टिकल मॉडल अभी तक चले जा रहे हैं. मुझे डॉक्टर मेरे पास मौजूद हैं, मुझे आगे लर्न करना होगा. मुझे डॉक्टरों की सरपरस्ती के अंदर मैं आगे बढ़ जाऊंगा. अभी तक मैं अपनी इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ. ये जो कंडीशनिंग की बात है, इसके अंदर आपको एक डायग्राम नजर आ रही है कि एग्रीकल्चर बायोमास आ रहा है. इसकी शेपिंग है. देयर आर लॉट ऑफ प्रोसीजर्स. आई हैव द इक्विपमेंट्स, मशीन्स एंड अवेलेबल, so I can convert all type of materials into biomass gasification. Next. These are the very special gas engines, have the 600 RPM. These engines are very suitable for the biomass gasification, for the economic design. For the economic, this is very important, but economic design. 600 RPM gas engine. They have less maintenance. The high RPM engines, my expertise also a gas engine. I am specialized in gas engines as well. So the low RPM gas engines are suitable. We can convert all the standard engines also on the gasification power generation to run. This is the ash biochar I already explained. We have the black gold. You can see on the here. There are two qualities of black gold. One is ash. This is the rich of potassium, and this is a 90% dissolvable in the water. Spray for the agriculture. Even can we put in the watering. That contains complete phosphorus and many other nutrients for agriculture. And the iron and many other manganese and copper, zinc, boron and platinum, many things are. This is also very important thing. In these the biochar and ash will be used for the women's face. खवातीन को खूबसूरत बनाने के मास्क जो है वो भी इसमें से बनते हैं. ये भी हमारी लोकल इंडस्ट्री की जरूरत है, जिसको मुख्तलिफ तरीकों से हम पूरा करते हैं. तो ये हम यूज कर सकते हैं. ये आप देख रहे हैं बिफोर एग्रीकल्चर में, बिफोर एप्लीकेशन, आफ्टर एप्लीकेशन, यू कैन सी द रिजल्ट्स. और फिर आगे देखें, ये आगे और ये ब्रिक्स हम बना के बायो चारकोल को हम घरों के खाना पकाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. नेक्स्ट.
ये आप देख सकते हैं, this is the Bachar charcoal. They have the 780. This is the odorless and smokeless and high resistance value. 5 to 6 hours can have the heating resistance. And 780 degree centigrade temperature. That's ideal for cooking food and for the hoteling and for the industries, many more. Next, sir. So the advantage, everybody, I already talked about much more about the advantages. Already I explained. And if someone want to learn more about this, this is the enough, I think. Next, this is the conclusion. Conclusion, I already also explained to the 1 kg of electricity can be produced from 1.6 kg of rice husk. 1.6, 200 gram I take as a wastage. So production of that produce 45% of organic fertilizer. There are many grading of organic fertilizer we can separate by separate fertilizer. The final thing is the yield is 30 to 35% biochar, charcoal for cooking industries and many more, heating and cooling, many more. This is my message. But what we have listened, what we have to do practical, this is the main theme of my presentation. Thank you for your time and listening me beyond my writing presentation, and some messages were hidden in my words. So I have given the solution for the nation, for the country. I also to my message for the Chief of Army Pakistan. He is doing very efforts for the development of the country and economy. So my message also have the solution for the Pakistan defense organization taken adopt the technology and to utilize to self-sustainable system. Thank you so much. Thank you so much, Steve. Thank you so much. Dubai, ये जो कभी टेक्नोलॉजिस्ट दिल से बात करता है तो वो सर्वर और सर्वर सवाल बात भी किया जाए या भी कर सकते हैं जी। सवाल का अभी इस वक्त वक्त नहीं है, सवाल का टाइम खत्म हो गया इस वक्त. We will have in the end we'll have keep some time for question answer session. इसके बाद अगली प्रेजेंटेशन है और वो गलती से मेरी है, तो आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी. सर्वर से ज्यादा मैं बोलता हूँ. Anyway, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हमने बायोगैस और बाकी सारी चीज़ों पे बात अच्छी तरह कर दी. जरूरी है. ठीक है, ठीक है भाई. अच्छा, राइट. हम ये जो सिम्पोजियम आज है पाकिस्तान अकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग का, ये 34th सिम्पोजियम है. पाकिस्तान अकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग रेगुलरली कटिंग एज टेक्नोलॉजी पर बात करती रहती है और सेंसिटाइज करना चाहती है हुकूमत को, और उसमें कई दफ़ा बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर आते हैं. आमतौर पर बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर इंटरनेशनल भी आते हैं. इस दफ़ा इस बायोमास के अंदर जो बायो एनर्जी के ऊपर ख़ास तौर पर है, हमने कोशिश की कि इंटरनेशनल भी आए, लेकिन हमारे पाकिस्तानी भी इतने थे कि हमें ज़रूरत नहीं थी बाहर से आने की. टेक्नोलॉजी के ऊपर जो बात करते हुए मैं पहले तेज़ी से गुजरूँगा और उसके बाद फिर आपसे मैं बात करता चलाऊँगा एक एक चीज़ के ऊपर. सबसे पहले जो है जिसके ऊपर हमें ये बहुत एम्फेसिस देना है वो है इस कंट्री का रिजॉल्व. आर ट्रांजिशन गाइडलाइन क्या होनी चाहिए, एग्जिस्टिंग एनर्जी सिनारियो क्या है, बायो एनर्जी क्या है, सवालों की दोबारा कंक्लूजन रिकमेंडेशन. सबसे पहले ये जो अभी तक जो प्रेजेंटेशन में ये आई है माइक्रो लेवल पे. अब जो मैं बात कर रहा हूँ ये मैक्रो लेवल पे है. ये वो है जिसके बेस पे मैंने ऑल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड बनाया था. उस लेवल की बात हो रही है ये, अगर पूरे मुल्क के लिए है. उसके लिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले एक रिजॉल्व देखें, मुल्क का रिजॉल्व. मुल्क को सबसे पहले डिसाइड करना है to reduce national energy imports dependence by 10% each year. ये टारगेट होना चाहिए हमारा. एंड 3 साल के बाद ये 20% पे ले जाए. Use only Pakistani products.
even if they are inefficient in the beginning, cost saving will anyway accrue. Then resolve ये होना चाहिए कि continuity of implementation of decisions to 5 to 10 years. वो change ना हो, direction change ना हो, हमें एक ही direction में चलते जाएं ताकि कुछ चीजें नजर आएं. और इसके लिए policy document and manpower deployment for long term होनी चाहिए. इसी को कंटिन्यू करें तो हम कहेंगे कि हमने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी मैन पावर इस्तेमाल करना है, ट्रेन करना है आदमी को, उनको चलने देना है, लड़के लूड़े जैसे मर्जी हो, हमने उसको चलने देना है और टॉप लेवल कमिटमेंट हो और पूरी कंट्री पार्टिसिपेट करे एट टाइम. और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर, वो है रिजॉल्व टू ओवरकम एंटी local development lobby. That is so strong that it will sabotage by stating we can't do it due to poor quality, we can't do it inefficient product, we can't do it because of international pressures. Okay? तो ये सारी चीजें हमें पहले समझनी है और वो समझ के उसको तैयारी करनी है अपने आप को ज़हनी तौर पे. फिर facilitate financing for development of RE products. अब मैं इसके अंदर आपको जब एलैबोरेट कर रहा हूँ आपको अंदाजा हो जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ. और अगर हमने सक्सेसफुल होना है तो हमारी टॉप लेवल को ये रिजॉल्व से पास होना चाहिए, तब पाकिस्तान डेवलप करेगा. राइट. नेक्स्ट एडवांटेजेस क्या है रिजॉल्व के. बायो एनर्जी टेक्स लीड रोल टू रिड्यूस नेशनल क्राइसिस. Balance savings of 10% each year in energy. Details will follow with data availability while ensuring energy security. सबसे important चीज हमारे लिए energy security. हम तेल की वजह से मारे जा रहे हैं, LNG की वजह से मारे जा रहे हैं, वो बाहर से आती है सारी, तो हमारी energy security आएगी. Objective is to reduce import to almost zero. ये होना चाहिए national resolve. Local manufacturing. Develop local technologies with local materials and create thousands of jobs. ये नहीं हुआ. मैं आपको जैसे दिखाऊंगा आपको हैरान हो जाएंगे कि हो क्या रहा है पाकिस्तान से, क्या हुआ है अभी तक. जब लोकल मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो सर्कुलेशन ऑफ फंड्स होगी नेशनल इकोनॉमी. ये सारा पाकिस्तान के अंदर सर्कुलेट बाहर नहीं जाएगा. LNG आ रही, सारा पैसा बाहर जा रहा है. कोल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, सारा पैसा बाहर जा रहा है. Bioenergy savings will reduce load shedding and also reduce environmental degradation. आखिरी आइए हमने based on the advantages, philosophy for future energy policies in Pakistan should ensure पहला only reliance on own financial resources through public sector development program. हम अपने ही financial resources बात करें, छोटे-छोटे पैसे बात करें अपने पैसे. गोरे से लोन ना लें किसी से, हम ना चाइना से, ना गोरे से, ना पीने से. एम्पावरिंग पीपल, हम एंड यूजर टेक्नोलॉजी पे आए. मैं ये बात कर रहा हूँ जैसे ही इस वक्त ग्रिड इतना वीक है, हमारे पास बिजली की लोड शेडिंग है, गैस की लोड शेडिंग है, तो गांव टाउन्स जो बिल्कुल सबर्ब्स के अंदर है उनको कैसे देंगे आप. तो हम ऐसी टेक्नोलॉजी बनानी है जो डिसेंट्रलाइज हो और दूर दूर इंडिपेंडेंट इस्तेमाल हो. हमारे यहाँ से कनेक्शन ना हो, कोई ग्रिड ना हो, कोई लोड शेडिंग ना हो, खुद ही करे, हर चीज खुद ही करे. वो प्रोड्यूस भी करे, वहाँ पे वो सरसों को तेल से बिजली पैदा करे या सूरजैन से करे या किसी जिट्रोफा से करे, लेकिन इंडिपेंडेंट छोटे छोटे सिस्टम बने, हम बिल्कुल डिसेंट्रलाइज हो जाए. ओनली ग्रीन टेक्नोलॉजी टू परस्यू. अब आगे कोई हमें कोल गैस के ऑयल की बात नहीं करनी चाहिए. ये रिजॉल्व होना चाहिए. नो रिलायंस ऑन इंटरनेशनल लोन्स, वो ऑलरेडी बहुत हो चुका हुआ है. वी डोंट नीड टू गो देयर. एंड इन्वेस्टमेंट हाउएवर इज वेलकम. अगर वो इन्वेस्ट करना चाहे जरूर दे वेलकम. अच्छा, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये सिर्फ हवा में नहीं है. यही चीज एग्जैक्टली इंटरनेशनल सोलर सोसाइटी ने डेकेड्स पहले कही थी. उन्होंने सबसे पहले कहा कि गाइडलाइंस क्या है, दुनिया भर को फॉलो करना हो तो क्या हो. सबसे पहले है उसका कि डिटरमिन लोकल एनर्जी यूज. सबसे पहले है डिटरमिन लोकल एनर्जी यूज. एनर्जी चाहिए क्या, गांव का क्या चाहिए, गांव को उसको छोटी सी गैस चाहिए छोटी,
उसको थोड़ी बिजली चाहिए, एक लैंप, 2 लैंप चाहिए उन्हें, और इस गांव वाले तो एसी तो है ही नहीं उनके पास, फ्रिज तो है ही नहीं, तो पहले आप उनको बिजली और गैस तो दे दें, उसके बाद जब उनकी डिमांड बढ़ती जाएगी तो हम उसको बढ़ाते चले जाएं। और दूसरा ये कि ये क्या उसके डिटरमिन लोकली अवेलेबल आर ई रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, यानी हमें जरूरत नहीं है कि हम यहाँ से बैठ के, कराची से बैठ के कोयटा के सबब में 300 किलोमीटर दूर जहाँ पे ग्रिड है ही नहीं, जहाँ कुछ भी नहीं है, और यहाँ से बिजली सप्लाई करने की कोशिश करें या गैस सप्लाई करने की कोशिश करें, हमारी कोई जरूरत नहीं है। वहीं पे बायोमास कब करें, वहीं बायोगैस करें, वहीं पे हम बायोडीजल करें, लोकल बायोडीजल पैदा हो रहा हो, बायोएथेनॉल लोकली पैदा हो रहा हो, हम उससे काम करें बजाय इसके कि यहाँ से हम चीज सप्लाई करें और लोकली मैन्युफैक्चर हो। दैट मीन्स हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, हर प्रोविंशियल हेडक्वार्टर के अंदर वो चीजें बन रही हो। तो हमारा काम ये नहीं है कि हम यहाँ से पैदा करके बड़ी चीजें से पाकिस्तान का माइंडसेट चेंज करना है। हमें सिर्फ तबेला और मंगला डैम समझ में आता है, ये छोटी टरबाइन जो सर्वर बनाए थे कोई समझ में नहीं आती। हमें छोटी छोटी चीजें बनानी है। सोलर कुकर चाहिए हमें, गांव के सोलर कुकर चाहिए, गांव को छोटी टरबाइन चाहिए। व्हाई आर वी नॉट डूइंग दैट? नेक्स्ट, ये अच्छी बिल्कुल सिंपलाइज कर रहा है, एस्टैब्लिश रीजनल एंड नेशनल गोल्स रिगार्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी। ये भी हमें रीजनल हो, छोटे छोटे हो, गांव के, डिस्ट्रिक्ट के काउंसलर्स शुड कम इन एंड से मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। फिर है adopt integrated energy policies to local prerequisites and available technologies। ये भी वही है कि हमें बहुत बड़ी चीज नहीं सोचनी। आज जैसे कि जनाब कोयटा में बिजली पैदा हो रही हो और उसे 400 किलोमीटर दूर इधर उधर जा रही हो, कभी भी नहीं आएगी, 75 साल में नहीं आएगी, आगे कैसे आएगी? गैस कैसे आएगी? 15 यूजर है, 500 यूजर है, 300 यूजर है, वो गैस की पाइपलाइन है, सारी जिंदगी नहीं पे कर सकते वो। उसके बाद evaluate the development and adjust goals and policies at regular interval। ये एक पॉलिसी के अंदर एसेंशियल इंग्रेडिएंट होता है। फिर आगे ट्रांजिशन के अंदर जो चीजें जो शहर के लेवल की चीजें हैं, सपोर्टिंग मेजर्स लाइक इन्वेस्टमेंट टैक्स सब्सिडी। बड़ा इन्वेस्टर आ जाता है तो वो उसको डाले जब उसको सारी चीजें मिलेंगी, और ये सारी चीजें जो बड़े बड़े इन्वेस्टर के लिए है सारी चीजें। फिर आइए हम वापस दोबारा चलते हैं और बात करते हैं कि एग्जिस्टिंग एनर्जी सिनेरियो क्या है। सबसे पहले पॉलिसी के अंदर अगर आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे मेरा, तो डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनर्जी टेक्नोलॉजी इज मिसिंग इन ऑल पॉलिसीज। आज तक किसी भी पॉलिसी के अंदर 75 साल के अंदर ये नहीं लिखा हुआ कि मैन्युफैक्चर करना है, लिखा ही नहीं है, ये है ही नहीं। तो कैसे इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा मैन्युफैक्चरिंग करने? उसको मैन्युफैक्चरिंग में फोर्स करना है हमने कि आपने हर चीज मैन्युफैक्चर करनी होगी। ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन में आपको शर्म आएगी, मुझे शर्म आ रही है। आज मैं गया हूँ सारी ऑयल एंड गैस कंपनीज के अंदर, 100% इक्विपमेंट इंपोर्टेड, 100%। ऑयल रिग एक कंपोनेंट बाहर से आता है। एक एरिया है जहाँ पे ऑयल रिग, जहाँ से गैस आ रही है, वहाँ पे आपको जाने की जरूरत नहीं है, हर चीज इंपोर्टेड है। नट एंड बोल्ट भी इंपोर्टेड है। एक कंपोनेंट खराब होता है उनको 4-6 महीने इंतजार करना पड़ जाता है। दिस इज द कंडीशन है। तो हर चीज ऑयल गैस एक्सप्लोरेशन में 100% इंपोर्टेड। थर्मल पावर सेक्टर में 100% इंपोर्टेड। नो स्टैंडर्ड साइज। तो आप अगर मैन्युफैक्चर करने जाए तो कैसे स्टैंडर्ड साइज हो? एक 50 मेगावाट, 75 मेगावाट, 150 मेगावाट, 100 मेगावाट, 500 मेगावाट, 1000 मेगावाट। हमारे पास कोई स्टैंडर्डाइजेशन होनी चाहिए ताकि हम मास मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आए। तो हमें सोचना है एट नेशनल लेवल। हाइड्रो पावर में ऑल इंपोर्टेड इक्विपमेंट, नो स्टैंडर्ड साइज एंड आफ्टर सेल्स आर आल्सो थ्रू पब्लिक फंड के अंदर आफ्टर सेल में बाहर से आती है। यानी कोई चीज स्टैंडर्ड नहीं है। कहीं हम एक स्टैंडर्ड कर ले 50 मेगावाट, हमारी एक इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री है जो 50 मेगावाट तक 40 MVA तक का ट्रांसफार्मर बनाती है। 50 मेगावाट टरबाइन बनाएंगे तो बहुत सिंक्रोनाइज हो जाएगा, हर चीज होगी, और ये सारी चीजें पाकिस्तान में बन सकती है अगर हम स्टैंडर्डाइज करें। विंड पावर के अंदर 85% इंपोर्ट है, नो स्टैंडर्ड साइज, मोस्टली O&M इज आल्सो इंटरनेशनल। एंड अगेन पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए सामना बड़ा मुल्क है, O&M और ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए बाहर के लोग आए हुए, चाइनीज बैठे हैं वहां पे।
हमने अपने आप को अभी तक ट्रेन नहीं किया, एक्सेप्ट फॉर 1 or 2 ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने कर लिया है, और सारे पार्टनर से सोलर पावर प्रोजेक्ट में ऑल इक्विपमेंट इज 100% रिपोर्ट, 100% रिपोर्ट, और फटाफट खत्म कर लगा के हमकी फौरन हो गया, हमने एक साल के अंदर कर दिया, 100% रिपोर्टेड है। आइए, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंपॉर्टेंट इस तरह है कि आज के लिए आज तक हुकूमत पाकिस्तान ने पैसा दिया ही नहीं। अब आप देखें यहाँ पे पीएचडी पे एलोकेशन 2018-19 में हाइड्रो पावर के लिए आप देखें 56%, ऑयल के लिए, न्यूक्लियर के लिए 13%, थर्मल पावर के लिए 18%। ये किस चीज के लिए जा रहा है पता है आपको? थर्मल पावर के लिए क्यों दे रहे हैं हम? ये किस लिए जा रहा है? ये पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है। रिन्यूएबल के लिए 0, कोल के लिए 11%। 2022-23 में हाइड्रो के लिए 63%। अभी भी हुकूमत पैसा लगा रही है, कहते हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर आ रहा है। थर्मल पावर के अंदर 22%। ये किस चीज के लिए जा रहा है? ये वो डेट मीटिंग का वो जो सबको डेट के जो पैसे चल रहे हैं, जो हमको चढ़ाए जा रहे हैं। बाहर से हमने और तेल इंपोर्ट किया, कोल इंपोर्ट किया, वो पूरे पैसे दे सकते हैं, वहां देते हैं। न्यूक्लियर के अंदर 14%, आरई के लिए 0। आगे देखें 2023-24 के अंदर थर्मल पावर के लिए 29%, हाइड्रो के लिए 56%, कोल के लिए 0, न्यूक्लियर के लिए 14%, आरई के लिए 0%। भाई क्यों 0% दे रहे हैं? somebody has to be shaken कि क्यों 0% दे रहे हैं हम? Why can't we invest that much in renewable energy also? तो हमें 10% इन सबों को देना चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर। वो एकदम कॉस्ट इफेक्टिव होती है, एकदम इकोनॉमिकली वायबल होती है। शायद ज्यादा जज्बाती हो गया, सॉरी फॉर दैट। असल तो बहुत कुछ पानी है। अब ये देखिए, इधर देखिए, यहाँ पे शेयर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, इसमें रिन्यूएबल एनर्जी हैज कम इन बाय 2022 हम 4% पे आ गए थे। Despite of no funding from public sector development program, हम 4% पे 2022 में आ गए और 2023 में 5% पे आ गए। अल्लाह का शुक्र है कि ये हुआ, and this was basically because of that 2006 की पॉलिसी which we had done। उसी पे सारी इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर आई, सारी प्राइवेट सेक्टर के अंदर आई। इसीलिए कोई विंड का वाली बारिश नहीं है, जब चाहे रोड शेडिंग कर दें उसकी, जब चाहे कर्टेलमेंट कर दें उसकी। ये जो कोल के मुताबिक 600 मेगावाट पे बात करते, 1850 मेगावाट की विंड एनर्जी की बात नहीं करते। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में किसी को हुकूमत को इंटरेस्ट नहीं है उसके अंदर। अब आइए, उतनी ही इंपॉर्टेंट चीज जो नेक्स्ट है वो है बायो एनर्जी के ऊपर। ये मेरे सारे भाई जो आजकल बायो एनर्जी में काम करेंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हुआ क्या है कि बायो एनर्जी के एक्सपेंसेस हैं वो आज तक सारे अनअकाउंटेड हैं इन नेशनल बजट। दे हैव नॉट बीन टेकन केयर ऑफ इन द नेशनल बजट। हैरानी की बात है। अब आपको दिखाता हूं मैं ये सारा मैंने डाटा जो निकाला हाउस होल्ड एनर्जी स्ट्रेटजी सर्वे से निकाला है। ये 2018-19 हर 5 साल के बाद एक ये छपती है किताब, और पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स वाले छापते हैं, और इसमें रूरल हाउस होल्ड के मुताबिक सारी इन्फॉर्मेशन होती है। इसमें आप देखें दिस एनुअल एक्सपेंसेस ऑन बायो एनर्जी जो गांव में होती है, पाकिस्तान की एवरेज निकाली हुई है, जैसे वुड, काउ डंग, क्रॉप रेजिड्यू, चारकोल, ये पूरा पाकिस्तान का है। एंड एवरेज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन हाउसिंग, इसमें से वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस और अदर फ्यूल्स के ऊपर 8,830 रुपए हर घर वाला खर्च करता है। उसमें से आउट ऑफ दैट फंड रुपीज स्पेंट ऑन लाइटिंग एंड फ्यूल इज 2,958 rupees per household. Out of that, spent on bioenergy, that means cow dung, wood, crop residue, charcoal, वगैरह, इस पे 864 rupees per month. Per household spent on bioenergy is 10,368, और number of households in the country is 40.3 million. तो population rural में जो है वो 62% है, so 0.62. Number of rural houses in million is 25 million. Okay, so grand total of expenses based on rural population is 258 billion rupees
which is there, which is not accounted for in national budget at all. आप ये देखिए, इसको स्लाइड को आपको आई ओपनर है कि नेशनल बजट के अंदर हमने 258 बिलियन रुपीस को अकाउंट फॉर किया ही नहीं, जबकि पूरा एनुअल बजट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन दैट इंक्लूड्स फ्यूल एंड एनर्जी इज 216 बिलियन रुपीस। तो हमारा बायो एनर्जी इज ऑलरेडी मोर देन 216 बिलियन रुपीस, और अगर आप फ्यूल एंड एनर्जी ले तो 54 बिलियन है उसका। तो हम इतनी बड़ी अमाउंट को इग्नोर किया हुआ हम लोगों ने सब, इसलिए इग्नोर किया। छोटे छोटे गरीब लोग हैं, उनको कौन सुनता है, उनके कौन खर्चे को देखता है, क्यों उनको करे। हालांकि इसको करने से हमारा इतना फायदा होता है कि पाकिस्तान ग्रीन हो जाता है। हमें हमारे कार्बन क्रेडिट्स के अंदर हम बहुत अच्छे हो जाएंगे। हम कोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन कोल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज हम यहाँ ग्रीन है बहुत ज्यादा। अगली स्लाइड जो है वो मुझे ये क्यों नहीं हुआ पे सवाल है अगला वाला। वो इसलिए है कि डोमिनेंस ऑफ फॉसिल फ्यूल इन प्राइमरी एनर्जी सप्लाई है। डोमिनेंस कैसे है कि पूरा हाइड्रो रिन्यूएबल एनर्जी न्यूक्लियर मिला तो 15% बनता है, और थर्मल को 85% बनता है लास्ट ईयर। और इसके बरक्स अगर हम देखें कि पूरे मुल्क के साथ का हशर क्या हुआ है, वो ये देखें कि हिस्टोरिकल डोमिनेंस ऑफ फॉसिल फ्यूल इन प्राइमरी एनर्जी सप्लाई। 1977-78 जब किताब पब्लिश होती थी पाकिस्तान एनर्जी बुक, उस वक्त से सारा डाटा है, ऑथेंटिकेटेड डाटा है कि हम हर साल 85% डिपेंडेंट रहे ऑन प्राइमरी एनर्जी सप्लाई और फॉसिल फ्यूल। जब 85% डिपेंडेंस हो, तो सारे मुल्क की इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं। व्हाई शुड दे टेक केयर ऑफ आरी, जबकि हाइड्रो पावर और सारा आरी विंड सोलर मिला के 15% से ज्यादा बढ़ नहीं सकता। उनकी आवाज ऊपर आती ही नहीं 15%। वो साइड पे रखिए उन्होंने किया होता है, वो सब थर्मल वाले लगे हुए हर जगह पे, और इनके सारे जो जितने भी सारे सेक्शन ऑफिसर से लेकर सेक्रेटरी तक है, दे गेट प्रोमोटेड इन दैट ब्यूरोक्रेसी टू प्रमोट ही हाइड्रो पावर थर्मल पावर के अंदर होगी। उनको समझ में नहीं आएगा कि विंड सोलर एनर्जी क्या है, तो इसलिए वो बिल्कुल इग्नोर है। और इसमें ही इंपॉर्टेंट चीज ये देखिए सर, दिस इज किलर। हमने $227 बिलियन की क्यूमुलेटिव फॉसिल फ्यूल पे किया है एक्सपेंडिचर इन दिस 40-50 ईयर, जो मैं डाटा बता रहा हूं आपको। और एक चीज भी पाकिस्तानी बनी भी नहीं है, एक चीज भी थर्मल के अंदर एक चीज भी पाकिस्तानी डिजाइन तो बात कही है बनी हुई नहीं है, कॉपी नहीं की भी हमने। हैरानी की बात है। अब कब जागेंगे हम, कब जागेंगे? अब एक क्वेश्चन करना चाहिए, एक्चुअली दे शुड बी हैंग। ये लोग हैंग कर देना चाहिए जिन्होंने एक पैसा भी लगा दिया। $227 बिलियन का 1% लगाते तो $2.2 बिलियन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट लगा होता। हम अफसोस है इसकी वजह से क्या हुआ है? इसकी वजह से क्या हुआ है कि हम पहले यहाँ पे प्राइमरी एनर्जी इंपोर्ट्स वर्सेस इंडिजिनस प्रोडक्शन इन पाकिस्तान, हमारा पहले ये ऊपर वाला कर्व था, स्लोली ग्रेजुअली इंपोर्ट ये लोकल था, हम ज्यादा थे, और ये इंपोर्ट्स हैव ऑलरेडी टेकन ओवर। और ये इस वक्त की पोजीशन ये है कि हमारा जो बैलेंस है, रेशियो ऑफ इंपोर्ट वर्सेस इंडिजिनस प्राइमरी एनर्जी सप्लाई हैज गॉन क्रॉस टिप्ड ओवर। हमारा रहना चाहिए 40-50%, इससे ज्यादा इंपोर्ट होना नहीं चाहिए। तो जब इंपोर्ट इतनी ज्यादा होगी तो आप क्या कर सकते हैं? यू आर नाउ डोंट हैव एनी कंट्रोल। इकोनॉमी का कंट्रोल 85% थर्मल पावर का है, फॉसिल फ्यूल का है। दे टिप्ड ओवर, इंडिजिनस डेवलपमेंट है ही नहीं। $227 बिलियन हमने फूंक दिए, जला दिए, खाद में मिला दिए, और एक भी टेक्नोलॉजी का कंपोनेंट डेवलप नहीं किया। यहां से आते हैं हम दोबारा बैक टू बायो एनर्जी के लिए। मैं इन 40 में नहीं जाऊंगा, ये ऑलरेडी बात हो चुकी है इसके ऊपर। मैं अगले एक पे आता हूँ, ये बायोडीजल टू रिप्लेस नॉर्मल डीजल, ठीक? बायोगैस टू रिप्लेस नेचुरल गैस, बायोइथेनॉल टू रिप्लेस gasoline, बायोमास टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, वेस्ट टू पावर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इन सारों के ऊपर काफी डिटेल में ऑलरेडी बात हो चुकी है, सो आई विल बी जस्ट गोइंग थ्रू क्विकली
वो ये कि दुनिया के अंदर क्या हुआ है, ये आप ग्रोथ देखें बायोडीजल प्रोडक्शन की, ये 11 से मैंने दिखाई है 2021 तक की। अब आगे चले, इसमें है कौन, यूरोप है, एशिया पैसिफिक है, यूएस है, ब्राजील है, लैटिन अमेरिका है, कनाडा, मैक्सिको है। आगे देखिए, ये जो बायोडीजल आज की बात नहीं हो रही, बायोडीजल दुनिया में आए हुए ये अर्ली 90s से मैंने डाटा रखा हुआ, इससे पहले शुरू हो गया था 90 से। हम आज 30 साल हो गए, पाकिस्तान में बात ही नहीं होती। 2006 की जो मैंने पॉलिसी लिखी थी उसमें हमने बायोडीजल के लिए खास तौर पे रखा था, फिर हमने 10% बायोडीजल का अप्रूव कराया था, शुरू भी कराई, एक कार बनाई लोगों ने कहा, उसके बाद वो डिपार्टमेंट ही बंद कर दिया गया। ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंट बोर्ड इज नो मोर देयर, इट्स गॉन अंडर पीपीआईबी, जिसका पूरा इंटरेस्ट हाइड्रो पावर का है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन छोटे छोटे प्रोजेक्ट के ऊपर, $100 मिलियन पे बात नहीं करते, $1 बिलियन की बात नहीं करते, तो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन रिन्यूएबल एनर्जी। तो उसकी वजह से ये हुआ है कि हमारे पास ये जो सारा यूरोप ने 248,000 बैरल्स पर डे प्रोड्यूस हो रहा है, एशिया पैसिफिक में हो रहा है, यूएसए में हो रहा है, ब्राजील में हो रहा है, हर जगह हो रहा है। पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। वाई बिकॉज हमने हुकूमत ने पैसा लगाया नहीं इसके ऊपर। और ये जस्ट टू अगेन, ये दूसरी तस्वीरें हैं जो कैसे होते हैं बायोगैस प्लांट के। अब ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमें थोड़ा सा एम्फेसिस देना है कि रॉ मटेरियल क्या हो रहा है दुनिया भर में इस्तेमाल। सोयाबीन हम यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम भी प्रोड्यूस करें, और हम कहते हैं फूड चेन। मेरा भाई वो कह गया था फोरम के, जनाब हमें फूड, वो गौरव की बात पे नहीं आना। पाकिस्तान के अंदर हमें चाहिए इंडिजिनस चीज, फॉरगेट अबाउट गोरास, वी शुड डू आवर थिंक आवरसेल्फ। हमें अगर सोयाबीन पे बायोगैस मिलती है तो बायोडीजल मिलता है, ले हम कॉर्न ऑयल, एनिमल फैट्स, रिसाइकल्ड ऑयल, कैनोला ऑयल, ये हम सरसों तेल में बनाए ना, हम वो बना सकते हैं, हम क्यों ना बनाए। हम पे पोस्ट करें जनाब आप फूड चेन को बचाएं, खुद इस्तेमाल करें, कॉर्न भी इस्तेमाल करें, सोयाबीन को इस्तेमाल करें। हमें कहते ना तुम ना करना, भूखे रह जाओगे। ये चीजें हैं सारी। अब इसी को लेके चले आगे। तो पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर, यार ठंडा तो नहीं है ना, बस नॉर्मल जो है। अच्छा, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में ऑलरेडी हम अच्छा खासा सीड बनाते हैं। कॉटन सीड ये 2 मिलियन टन है, सनफ्लावर है, रेप सीड है, ग्राउंड नट्स है, सेसमी है, लिनसीड है, कैस्टर सीड, ये सारे मौजूद है हमारे पास। हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है तेल निकालना, हम उसको आराम से बायोडीजल में कन्वर्ट करते हैं। मैं आपको बताऊं कि इतना आराम है कि मैं तेल पे चला दूंगा इंजन। सर्वर जैसे लोग मिल जाएंगे, हम तेल पे चला देंगे, हमें जरूरत ही नहीं किसी और चीज की जरूरत, गोरे पे जाने की जरूरत नहीं, इंपोर्ट की जरूरत नहीं। हर गांव के अंदर अपना सिस्टम लगाओ, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाओ, हर अपना सिस्टम, वही बनाए, वही खाएं, वही बिजली पैदा करें, वहीं पे वाटर पंपिंग करें, एग्रीकल्चर क्रॉप इंक्रीज करते जाए, और ज्यादा बन गया तो बेच दें। ठीक है, अब आइए इसका के लिए हमें करना क्या है। करना ये है कि बायोडीजल के लिए कैसे होगा इंट्रोडक्शन इन द कंट्री। सबसे पहले बायोडीजल लॉ होगा। बायोडीजल लॉ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। 10% ऑफ B10 इज ऑलरेडी अप्रूव्ड। अब मैं बताऊं, B10 इज इन $800 मिलियन एट दिस टाइम। इतनी बड़ी मार्केट है, वी आर कैपिटलाइजिंग, प्राइवेट सेक्टर में नहीं आया। उसके बाद कल्टीवेटिंग एंड हार्वेस्टिंग है, वो हमें करनी चाहिए। हमें ऑयल एक्सट्रैक्शन फिल्ट्रेशन इंडिजिनसली बनानी चाहिए। मैं इस वक्त कोशिश कर रहा हूँ मुझे सस्ता सा 30,000 50,000 रुपए का एक ऑयल एक्सपेलर मिल जाए। वो मिनिमम जो बनता है वो 1.5 लाख 2 लाख रुपए का आता है, मतलब अपने घर में लगा चुका होता है बायोडीजल बनाने वाला। अब मैं 1.5 लाख रुपए खर्च करके एक छोटी चीज लेके मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ, यार देखो 50,000 60,000 70,000 80,000 रुपए का एक ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट ले लो, ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट ले लो, और उसके बाद उससे बायोडीजल बनाओ। बायोडीजल बना के अपने डीजल जनरेटर चलाओ, बायोडीजल बना के अपनी हर चीज गांव के अंदर, छोटे छोटे गांव के अंदर कर सकते हैं हम। गांव में छोटे शहर में कर सकते हैं, राइट। तो अब हमारा है क्या चीज, ये कल्टीवेशन है। अब जी भाई तो पानी की बात है
अच्छा, ऑयल एक्सट्रैक्शन, फिर इसके बाद बायोडीजल प्रोसेसिंग, रिफाइनिंग, बायोडीजल मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ सब जगह हमें लोग चाहिए। ये जो नई पौधा आई है बहुत कम आई हुई है, लेकिन बहरहाल जो आई है अभी आए। इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल मैकेनिज्म चाहिए। ये पूरा बायोडीजल का कल्चर होगा, एक इंडिपेंडेंट बायोडीजल कल्चर होगा which will follow through this cycle। यही साइकिल एथेनॉल के अंदर आएगा, यही साइकिल बायोमास गैसिफिकेशन के अंदर आएगा, बिल्कुल यही साइकिल होगा जो मैंने सिर्फ एक आपको सैंपल के तौर पे दिया है। और इसको मैं सिर्फ जुबानी बात नहीं कर रहा हूँ, ये इसी इंस्टीट्यूट के अंदर ये लगा था यहाँ बाहर। ओके, सही में था या यहाँ पे था? सही में था। अच्छा ओके, सही में होगा फिर। डॉक्टर उस्मानी यहाँ थे, डॉक्टर उस्मानी यहाँ थे, वो वहाँ पे होगा। ओके, ये बायोडीजल प्लांट मैन्युफैक्चरिंग टू प्लांट एस्टरिफिकेशन प्लांट मेरा पेटेंट है। ये यहाँ बना, कराची में बना, जो जल जिसने बनाया वो भी यहाँ मौजूद है कराची में, मैं भी यहाँ मौजूद हूँ। ये बायोडीजल बनता है, इससे आराम से तेल डालें, वेदर इट इज कैनोला ऑयल, सेसमी ऑयल, कोकोनट ऑयल, जो पाम ऑयल, जो मर्जी मिल जाए मुझे, इससे बायोडीजल बन जाएगा। ओके, 100% इंडिजिनस लाइन, 100% इंडिजिनस लाइन। लेकिन इसके साथ और क्या चीज चाहिए आपको? वो रॉ मटेरियल चाहिए। ये रॉ मटेरियल ये रहा, ये सुखचैन, there are 100,000 सुखचैन trees in Karachi surroundings and पूरे पाकिस्तान के अंदर we have even more। करना क्या है आप? करना क्या है? टोटल आपने करना क्या है? ये बीज निकालने हैं, मैं और मेरा ड्राइवर मिलकर निकालते हैं ये बीज, और मेरे पास बोरी भरी भी है, हर साल होती है। अब मैं तेल निकाल करूँगा, वो फिर रह जाता है वहाँ पे, दूसरे काम में लग जाता हूँ। ये सुखचैन हर जगह लगा हुआ है, सुखचैन की ट्री हर जगह लगी हुई है। अगर आप बिल्कुल खास जगह वहाँ पे लगी हुई है, कराची में रोडों के दरमियान लगी हुई है। और मैंने लोगों से रिक्वेस्ट की और लगाओ सुखचैन, दरख्त लगा रहे, नीम की जगह सुखचैन लगा दीजिएगा। इससे दरख्त बड़ा सायेदार है और इसके बीज भी निकल के बायोडीजल भी है। फिर उसके बाद है जिट्रोफा, जिसकी बात की थी। जिट्रोफा मैंने बहुत ग्रो किया, बहुत ग्रो करवाया, बहुत अच्छी एक पॉलिसी बना के फिर दरमियान पाकिस्तानी लोग आ गए। जब पाकिस्तानी आता है तो फिर वो प्रॉफिट लेके भाग भी जाता है। वो ले लेकर उसने 60 रुपए का प्लांट बेचा, प्लांट दिए, छोटे प्लांट ट्रीज होते हैं, भाग गए। एनीवे, ये जिट्रोफा जो है ये हमारा एक बहुत ही तेजी से ग्रो होने वाला प्लांट है, इससे बायोडीजल निकलता है। इसके बीज आप देख रहे हो यहाँ पे, ये बीज है इसका जो कच्चा है इस वक्त, और ये इधर जो है वो आपको पक्का इसका बीज मिला है। एक इतनी ही अच्छी चीज जो आप लोग रोज देखते होंगे और आपने ऑब्जर्व नहीं किया होगा, वो है कैस्टर। ये एरंडी का दरख्त है। ओके, ये हर जगह उगा हुआ है। यहाँ से बाहर जाएंगे, ये फूल के नीचे उस साइड लगा हुआ है। इससे क्या है, आप इसके अंदर से ये ऐसा बंच में ट्री क्या बीज होते हैं, और बीज ऐसे निकले होते हैं। इस बीज को निकाले और बीज से बायोडीजल बनाए। अब इसके लिए कौन रोक रहा है हमें? सिवाय हम अपने आप पे, सिर्फ हमने अपने ऊपर रोका यार, हम क्या कर सकते हैं? और हम इंजीनियर है भाई, इंजीनियर नहीं करेगा तो कौन करेगा ये सारी चीजें? अब आइए, अगर इंजीनियर ना हो तो फिर क्या हो? मैं पैसे वाला हूँ, उन्होंने कहा था पैसे वाला, ये पैसे वाले का बात है। ये जो है डीजल सिनेरियो इन पाकिस्तान की बात हो रही है। डीजल फ्यूल जो है, ये मैंने लोकल फ्यूल, इम्पोर्टेड डीजल, इम्पोर्ट कॉस्ट और लोकल कॉस्ट निकाली है। आप ये देखें, ये जो लाइन जो है ये इम्पोर्ट कॉस्ट की हर चीज फाइनेंस ड्रिवन होती है। हमारा इम्पोर्ट जो है 2022 में 3.5 बिलियन डॉलर सिर्फ डीजल था। और हमने इंडिजिनस भी बनाया था, वो 4.5 बिलियन डॉलर बनाया था। साथ मिला के अगर आप देख लें तो तकरीबन 8 बिलियन डॉलर था। अगर 10% हम इसमें से पाकिस्तानी इंडिजिनसली बना लें तो 800 मिलियन डॉलर की मार्केट है। तो ये जो नए जो इंजीनियर निकल रहे हैं, इनको कोई जॉब करने की जरूरत नहीं है। बाहर खड़े होकर इसके एनर्जी के साथ जो दरख्त निकालें, सुखचैन लगी हुई रोडों के ऊपर निकालें, उसका बायोडीजल बनाए और बेचे, और 10% यानी 800 मिलियन डॉलर की मार्केट है। उसको हर पेट्रोल पंप वाले बेचते चले जाओ।
और डायरेक्ट भी जनरेटर वाले भी देते हैं। उस्मानी टेक्नोलॉजी में जनरेटर चल रहा है, उस पर चला दें, उस पैसे दे, उसको बायोडीजल दे। ठीक, ये है बायोडीजल का मार्केट इस वक्त अवेलेबल। और ये ज़बानी बात नहीं हो रही है, दुनिया के अंदर ये मार्केट है, ये ग्लोबल लीडिंग बायोडीजल की कंपनीज है, जिसमें एक अच्छा मुल्क है जो मुझे बहुत पसंद है, वो इंडोनेशिया है। एक ही मुसलमान मुल्क है, वो हम मुसलमान टेक्नोलॉजी सबसे आगे इस टेक्नोलॉजी में नजर आ रहा है। कनाडा में मुसलमान है, यूके में मुसलमान है, आयरलैंड में मुसलमान है, पोलैंड में मुसलमान है। मुसलमान नहीं है सिर्फ इंडोनेशिया में, बाकी सारे जो हैं मुसलमान है। इसलिए कि सब टेक्नोलॉजी लीड कर रहे हैं। हमने कहा दुनिया में मुसलमान टेक्नोलॉजी लीड करता है, जाहिर है वो मुसलमान होंगे तभी तो लीड कर रहे हैं। एनीवे दैट वाज ओनली सरकास्टिक, लेकिन इट्स अनफॉर्चुनेट दिस व्हाट इज हैपनिंग। ओके, अब यहाँ तक था ये बायोडीजल के ऊपर। अब आइए हम बायोगैस के ऊपर जाएं। बायोगैस के ऊपर आई गो वेरी क्विकली। ये दुनिया का अहम मार्केट, बायोगैस प्लांट्स इतने ज्यादा चल रहे हैं। ऐसे बायोगैस प्लांट्स होते हैं बड़े बड़े, ये बायोगैस प्लांट की इंटरनेशनल पूरा अमेरिका भरा हुआ बायोगैस प्लांट्स पे बायोगैस बिजली पैदा करने के लिए हर चीज बनी। पाकिस्तान के क्या मिशन है? पाकिस्तान में इस वक्त टाइम क्या हो गया, मैं कितना रन ओवरशूट कर रहा हूँ सर? अभी बचे 5 मिनट, 1:30 बजे तक भी 1:20 नहीं, 1:15 तक चलो, 1:15 और आई इंशाल्लाह फिनिश दैट राइट। अब आप ये देखिए, ये पाकिस्तान का डेटा है, हाउस होल्ड एनर्जी सर्वे का। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है हमारे जहन के आती है जनाब एयर कंडीशन का लोड, हम कहते हैं जनाब ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट। पाकिस्तान के एवरेज में 79% इसको है। इस 79% के अंदर क्या कुकिंग में क्या इस्तेमाल हो रहा है? 55% इज वुड, 2% केरोसिन, एलपीजी अब थोड़ी बहुत है, नेचुरल गैस 7%, इलेक्ट्रिसिटी 4%, क्रॉप रेजिड्यू 14% और काउ डंग 18%। अब इसको जब हम प्रोविंस वाइज देखते हैं तो लगता है बलूचिस्तान सबसे ज्यादा ग्रीन है, वहां लकड़ ही लकड़, जैसे कि 77% ऑफ देयर पॉपुलेशन यूजेस वुड, और वहां वीरान कर दिया उन्होंने। हर दरख्त को जड़ समेत उखाड़ लेते, तो वहां तो सोर्स ऑफ एनर्जी है ही नहीं। They take away the trees, they cut away all the trees. As a result, हम इसका ऑल्टरनेट देना चाहेंगे। ऑल्टरनेट में ऑलरेडी हमारी पहले बातें हो चुकी, काफी हमारे तीनों स्पीकर बात कर चुके हैं कि ऑल्टरनेट्स क्या हैं, लेकिन एक ऑल्टरनेट बायोगैस है। ये बायोगैस प्लांट है, इंडिजिनसली बना हुआ है। मेरा अपना डिजाइन है, नजीर यूनिवर्सिटी में जब मैं वाइस चांसलर मैंने बनाया था, इंस्टीट्यूट बड़ी पीछे इसको इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स ने पैसा दिए थे इसके लिए। और ये सारा 6 बैचों के लिए ये पूरा टेस्टिंग हुई, ऊपर बंदे खड़ा कर दिया, कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल स्टेबलाइज्ड है। ये जो ऊपर नजर आ रहा है, पूरे ऊपर वाले में बायोगैस है। ये नीचे वाला जो है इसके अंदर ये नीचे जो है इसमें काउ डंग होता है और ये गैस बनी हुई है। और इससे आप विद इन नो टाइम चूल्हा जला हुआ है, ज्यादा हो तो आप और ज्यादा सीरीज में लगा चले, दीवार साथ इधर चला जाए और बायोगैस बना हुई है। ये फिर एक मदीन के अंदर लगा हुआ है, यहाँ बायोगैस की डेमोन्स्ट्रेशन की। इसके बाद ये राइट साइड ये लाहौर में बना हुआ है, ये कराची में, नॉर्थ कराची में लगा हुआ है। और इसी की ये मुख्तलिफ तस्वीरें, ऊपर वाला जो है ये पूरा गैस से भरा हुआ है, ठीक। नीचे वाला जो है ये काउ डंग वाला होल्डर है, काउ डंग होल्डर है, दिस गैस। ये सारा इस स्प्रिंग लगा हुआ है, स्प्रिंग के प्रेशर से वो गैस थोड़ी दूर तक जाती है, ठीक। ये सारा मैंने लोगों को ट्रेन किया, बनाने का ट्रेन किया, ये सारे लोग यूज में ट्रेन हुए, कंफर्टेबल है। इससे पहले बायोगैस प्लांट ऐसे होते थे, वी वुड डिग इन जमीन में खड्डा खोदते थे, खड्डा खोदने के बाद उसके अंदर फिर हम लोहे के, ये स्पेशली लोहे के डिजाइन करवाते थे। तो somebody had to go out and get things, सिर्फ डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी एल्स। इधर भी मैंने पूरी प्रोडक्ट बना दी है। ये प्रोडक्ट अब जो है वो डायरेक्टली आप खरीदें और उसके बाद गांव में लगाते चले जाएं। तो दैट्स इट। और इसमें ये एक जो है ये
इंटरेस्टिंग चीज है कि जो बड़ा वाला प्लांट है, बड़ा वाला ये दिस इज फॉर बायोगैस फॉर कुकिंग, और छोटा वाला जो है उन्होंने लाइटिंग के लिए लगाया, इट्स ओनली फॉर लाइटिंग। अब हुकूमत पंजाब ने जो लगाए हैं वो ये लगे हुए हैं जमीन के अंदर, अगर सैलाब आए तो उसके बाद ये बिल्कुल खत्म हो जाए, ओके। ये लेकिन बेच नहीं सकते आप उसको, पहले जो मैंने प्रोडक्ट बनाई वो आप जा रहे हो कोई तो बेच दें, फिर मूव करें उसको साथ साथ ले जाए, इट्स वेरी वेरी सिंपल, इट्स वेरी वेरी गुड। अब एनर्जी प्रोविजन एट विलेज लेवल क्या है इस वक्त, ये आप देखिए कितना खूबसूरत दीवार है, ये लड़कियों को खास तौर पर नजर आनी चाहिए, बहुत खूबसूरत दीवार है, ये लड़कियों ने बनाई भी वहां पे, ओके। यहाँ पे ये सारे काउडन केक इस्तेमाल करें, एक टिपिकल विलेज है, एक इफ यू गो ऑन अ रोड साइड पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर, तो ये नजर आ जाएगा कैसे पूरी दीवारें ऐसे कवर की हुई है। और मैं कह रहा हूँ कि बजाय इसके कि वो काउडन इस्तेमाल करें, वो बायोगैस से अपने घर को लिफ्ट करें, ओके। ये बायोगैस से चूल्हा है, ये आमतौर पे पेट्रोमैक्स लैंप आप लोगों ने देखा होगा, वो बायोगैस चलता है, ये वो चीज है, ठीक। तो आप बायोगैस से हर चीज कर सकते हैं। अब चैलेंजिंग चीज आप लोगों के लिए क्या है जो अभी आए हैं, पाकिस्तान नेपाल से आधा है, बल्कि 1/10 है साइज में, इसलिए कि नेपाल में 3,17,000 बायोगैस प्लांट लगे में, और पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह 9,000। हम लोग एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी में दुनिया से पीछे हैं, हम नेपाल से पीछे, बिल्कुल इतना पीछे है कि नेपाल का, अगर मैं नेपाल का टारगेट बनाऊं 3 लाख का, तो 10 अगर मैं हर साल 10,000 बनाऊं तो भी 30 साल लगेंगे। अब हर साल तो 30,000 बायोगैस बनाऊं तो 3 लाख बनेंगे, और 10 साल के बाद हो सकता है नेपाल से तो वो 6 लाख पे लग जाता है, राइट। तो हमारा एक टारगेट है जो बायोगैस की पाकिस्तान के अंदर बनाने के लिए आगे चलना चाहिए, राइट। इसी को आगे ले हम अभी मैं सिर्फ नेपाल की बात कर रहा था, नेपाल जब चाइना, इंडिया और चाइना से मुकाबले में आता है तो गायब हो जाता है। इंडिया के अंदर 50 लाख है, चाइना के अंदर अब 3 करोड़ 90 लाख है, पहले ये 5 करोड़ थे, अब वो उन्होंने कम से 1 करोड़ के वो बड़े बना दिए, बड़ा कर दिया। बाकी सारे ममालिक हैं, इसके अंदर कंबोडिया भी है हमसे ज्यादा, इंडोनेशिया भी है, वियतनाम भी है, नेपाल भी है, सारे हमसे ज्यादा है, ठीक है। तो हम इससे सीखेंगे, पहले हम गोरे सीखना चाहते थे, वो नहीं सिखा रहा, नेपाल से सीख ले। और ये डिस्पाइट द फैक्ट, ये देखिए डिस्पाइट द फैक्ट, पाकिस्तान के पास इस वक्त 2022 में 10 करोड़ भैंसें थी, ओके। और जो जिसे हम 45,000 गीगावाट आवर पैदा कर सकते हैं। हाँ, एक जो चीज पंजाब ने अच्छी की है, पंजाब में 90% जितने बायोगैस प्लांट जो 9,000 लगे हुए हैं, उसमें मेजॉरिटी पंजाब में लगे हुए, वो अडेप्टेड टू न्यू टेक्नोलॉजी। सिंध के अंदर ओनली 4%, प्राइवेट सेक्टर के अंदर 2% लगाए हुए हर जगह पे, केपीके में 2%, बलूचिस्तान में 1%, एजीके में 1%। ये बड़े प्लांट लगे हुए, पाकिस्तानी बड़े बने हैं, पाकिस्तानी बनाने वाले लगाए हुए, आई अप्रिशिएट दैट, उन्होंने ये रेड ग्रीन वाला बनाया हुआ है। ये दिस इज फॉर 12 क्यूबिक मीटर, ये 8 मेगावाट का बायोगैस प्लांट है जो 2005-06 में उसको मैंने एलओआई दिया था, अभी वो 8 मेगावाट पैदा कर रहा है, 10 शुगर वाला, वही इसका 8 मेगावाट के लिए 5 मिनट के लिए ये मोलासिस से वो अपनी बायोगैस बनाते हैं। पाकिस्तान के अंदर क्या है, मैंने कहा था कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी होनी चाहिए, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी होनी चाहिए। ये देखिए हमारी ग्रोथ, हमने 1976 में बायोगैस पे काम शुरू कर दिया, हमारी ग्रोथ देखिए ऐसे आती है, हुकूमत सपोर्ट करती है, तो यहाँ सपोर्ट करती है, खत्म, फ्लैट, बस दिस इज व्हाट वी आर। कंटिन्यूटी होती तो हमारे पास बहुत अच्छे नंबर ऑफ बायोगैस प्लांट होते। अब मैंने वो सिर्फ उसको रखते हुए कि मैंने कहा जी बाकी हुकूमत सपोर्ट करना करे, ये बना हुआ है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर जाएंगे, मैं सपोज से दरख्वास्त है आए देखें उस प्लांट को और खुद बनाएं, आगे लेके चले। अब आइए यहाँ से फिर हम दोबारा आते और हम गैसोलीन पे जाते, और ये दुनिया की गैसोलीन की ये प्रोडक्शन है। इसमें जो मैं चीज दिखाना चाहता हूँ, आप लोग को, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि ग्लोबल पेट्रोलियम प्रोडक्शन कैलिफोर्निया ग्लोबल प्राइस दोनों किया हुआ है यहाँ पे,
अगर आप देखें इसके अंदर तो एक जो सबसे यूनिक सी चीज है बायोडीजल और एथेनॉल, दोनों की कीमत जो हमारा नॉर्मल ऑन शोर जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर जो होता है डीजल वगैरह उससे सस्ती है ऑलरेडी। और जब इंडिजिनाइज करेंगे तो ये जो बायोडीजल कॉस्ट है यहाँ आ जाए और सस्ती हो जाए, और बायोएथेनॉल भी इंडिजिनाइज करेंगे 100% इंडिजिनस मटेरियल है वो यहाँ आ जाए कॉस्ट। हमें तो फौरन इस पे जाना चाहिए। ठीक, ये मिडिल ईस्ट की ऑनशोर मिडिल ईस्ट वाले से सस्ता होगा, उसको बहुत बड़ी पावर है। इसके बाद हम दोबारा ये बायोफ्यूल प्रोडक्शन के अंदर अगर ब्राजील के नाम है इसकी हमारी जितनी आबादी है, अगर इंडोनेशिया का नाम है इसकी हमसे हमारी जितनी आबादी है, और जर्मनी का नाम है हमारी आधी आबादी के बराबर है, फ्रांस का नाम है, तो पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं है? तो पाकिस्तान का नाम इसलिए है कि मैंने काम करने की कोशिश की। अब मैं देखता हूँ आप 50 साल बाद यहाँ खड़े होके आप भी यही कह रहे हो जी हम तो नहीं बना सके, आप आगे बनाए अपनी फिक्र से। तो मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप लोग जाग जाए, कुछ काम करें। डोंट गो फॉर जॉब्स, प्लीज गो टू द बिजनेस। आप अपने बिजनेस में जाइए, किसी पर डिपेंड ना कीजिए, बिकम एंटरप्रेन्योर। और ये अगेन दोबारा मैं ज्यादा बात नहीं करता, ब्राजील बहुत आगे चला गया। एज ए नेशन दे डिसाइडेड, तो इसलिए वो आगे चले गए। और बाकी सारे में लिखा था ये ब्राजील आजकल एथेनॉल ऐसे इंपोर्ट करता, पूरी शिप्स जाती है उसके बाद भर के सारी दुनिया में जा रही है। हम हमारा क्यों नहीं हो रहा? हाँ, हम भी एथेनॉल प्रोड्यूस कर रहे हैं, इन सबों से मैंने कहा एथेनॉल प्रोडक्शन वालों से कि भाई आओ एथेनॉल को इस्तेमाल करते हैं गाड़ी के अंदर। मैंने लॉ बनाया, एथेनॉल का लॉ बनाया, 10% एथेनॉल इज अलाउड। इन्होंने हमने बाहर एक्सपोर्ट करने में पैसा कमाना, तो ये 10 पैसे के लिए उन्होंने हमारी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट नहीं होगी बाहर देगा सारा। आगे कुछ आगे मैं चलूंगा तेजी से। ये पाकिस्तान का ऑलमोस्ट टेक्नोलॉजी बगास पे बनाते हैं, जेडी शुगर वाले भी बगास से बनाते हैं। हाँ, ये जो है ये रबड़ से, ये लाइबेरिया में भी लकड़ी से कोयला बन रहा है। दिस इज सिंपल, वो लकड़ी ऐसे रखते हैं, उसको मट्टी में दबा देते हैं, उसको हल्के से आग लगाते हैं, वो कोयला बन जाता है। सिंपल, सो सिंपल। लेकिन पाकिस्तान में पीछे नहीं है। पाकिस्तान में ये ठट्टा के पास आप लोग जब जाएंगे तो गुजरे तो और से देखें दोनों साइड पे, इसी नेशनल हाईवे के ऊपर दोनों साइड पे आपको ये ऐसे वो मट्टी की बनी हुई झोपड़ी नजर आएगी जिसके अंदर कोयला बन रहा है। और ये लकड़ियां जो काट के जो देवी जो लगा हुआ पौधों से काटते हैं, उससे लकड़ी बना के आप लोग जो बारबेक्यू करते हैं, आप शायद आंखें खुली है, बारबेक्यू जो करते हैं उस लकड़ी में खोदते हैं। और ऐसे ही ये चारकोल स्वीडन के अंदर इसके किल बना के इसमें लोग फिर बनाते हैं। ये बायोमास पर होता है। आखिरी जो है वो वेस्ट ऑफ एनर्जी है। ये आप तस्वीर देख चुके हैं। ये पाकिस्तान का वेस्ट कॉम्पोजिशन है। हम सारी चीजें निकाल लेते हैं जो जलने वाली है, वो बेच देते हैं। तो इसलिए हमारा बहुत खराब है। हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि हम ये पाकिस्तान का वेस्ट डंप है, और इस वेस्ट डंप के अंदर हम चाहते तो हम इसको इतना खूबसूरत कर सकते हैं और लैंडफिल गैस का बनाते, इसको मट्टी से कवर कर देते, उसमें पाइप डाल देते और हम लैंडफिल गैस बनाते, इससे बिजली पैदा होती है। ये लैंडफिल गैस बने हुए 30 मेगावाट पे इससे बिजली पैदा हो सकती है। अब then we go back and we come back to the policy। हम यहाँ पे आए और फिर कंक्लूजन पे आते हैं। What's the time like? सर 5 मिनट है। Okay, I'll finish off. Okay, now we come with conclusions. Conclusion ये है कि gaps in all energy policy। सबसे पहला कंफ्यूजन है कि जितनी भी पॉलिसी बनी हुई सारी सिटी सेंटर है, ठीक है, they only address electricity needs of 37% of the population। तो वो जो गांव के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनको which is वो तकरीबन 229 मिलियन में से 84 मिलियन है जिनको एड्रेस ही नहीं करते हैं पॉलिसी के अंदर। 63% of population consumes RE like firewood, dung cakes, charcoal, carbon sticks, and complement them with costly LPG cylinders and solar PV for electricity now।
Within your town energy usage, RE में bio energy है, it is not included in national budget. That's one of the conclusions. The national budget के अंदर वो include नहीं हुआ, उसको include करना चाहिए. RE not covered in public sector development programs. तो हमें since decades it needs to be compensated for earlier neglect और हमें 10% से 40% जो public sector development program को जो पैसा है वो हमें bio energy में लगाना चाहिए. फिर conclusion में in decades to come ये आप लोगों के लिए है. In decades to come, convergence to renewable energy era will the company shift from oil dependence to technology dependence. For Pakistan, unless you take care, you take remedial actions. Otherwise, bioenergy की सारी चीजें बाहर से import होंगी. आप इंडिविजुअल से डेवलप कर सकते हैं, काइंडली उस पर जाग जाइए. In reality in Pakistan, RE is the actual source of energy. Rest all are alternative. Please understand that it is us. And after my recommendation क्या है? पहली recommendation जो है वो ये है कि manufacturing should be the first point in all energy policy. 10% reduction in imports so as to reach to reduce by 2030 50% import to be reduced. क्योंकि wind, solar, biomass तो कोई भी लेने में interested नहीं है. There has to be ministry created for that. मैंने alternative development board जब बनाया था तो जमाली साहब ने कहा था I will be personally in charge for you for bioenergy, for alternative energy. वो बेचारे खुद ही नहीं रहे 1 साल से ज़्यादा. लेकिन वहाँ उस वक्त मेरा और उनकी बात हुई थी, डिसाइड ये हुआ था कि हम उसको मिनिस्ट्री में कन्वर्ट करें. अब उन्होंने ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंट बोर्ड को ना सिर्फ पीएम सेक्रेटरी से उठा के घर में रखा, तो घर से उठा के पीपीआईबी के एक ज़ेली इदारा बना दिया. अब कौन रिकवर करेगा इसको? इट हैज टू बी मिनिस्ट्री. इट हैज टू, अगर हमने इस्तेमाल करना है 40% ऑफ पब्लिक सेक्टर प्रोग्राम, इट हैज टू बी अ मिनिस्ट्री, अ सेपरेट मिनिस्ट्री विद द फोर्थ पर्सन देयर and which has to be a IAE division. जहाँ आपको सब एम्प्लॉय हो, अभी से आप ऑल्टरनेटिव एनर्जी में आ जाएं, राइट? और पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट फंड इसके अंदर होना चाहिए, जिसके लिए रखा हुआ. और further recommendation is Pakistan should adopt and decide new energy policy based on पहला indigenous renewable energy resources for every indigenous technology. हमने कोई बाहर की टेक्नोलॉजी 2024 के बाद इंपोर्ट ही नहीं कर, हम सिर्फ इंडिजिनस डेवलप करा है. सस्टेनेबल पॉलिसी बिकॉज ऑफ इंडिजिनस रिसोर्सेज बनेगी. एंड यूज टेक्नोलॉजी दैट विल एम्पावर द पुअर पीपल इन द विलेजेस एंड टाउन्स, वहीं पे चीज बने. एंड thoroughly debated policy should be implemented immediately. And government must initiate design house to ensure completely indigenous designs for energy technology. It is a must. हर यूनिवर्सिटी के अंदर डिजाइन हाउस होना चाहिए जो एनर्जी टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट पे काम करे. With this, I come to end of my presentation on bioenergy in Pakistan, and I don't think so we have time for questions from my side. लेकिन बाकी तीनों ऑथर्स हैं, किसी का भी कोई भी सवाल हो उन ऑथर्स से तो काइंडली जरूर कीजिए. सर सरवर साहब से एक क्वेश्चन है. आपकी 100 किलोवाट की बायोमास प्लांट है, इसकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कितनी? सर बहुत सवाल कर रहे हो. इंजीनियर परवेज साहब. सर जो 100 किलोवाट का प्लांट है, मैं इसका आपको टेक्निकल प्लस कमर्शियल ऑफर सबमिट कर दूंगा. सर अगर हम की बेसिक बात करते हैं, अगर तो गैस इंजन हम लोकल यूज करें और जो हमारे लोकल मार्केट में यूज है तो तकरीबन ये कोई 7.5-8 करोड़ के अंदर प्रोजेक्ट लग जाएगा. तो 24 घंटे पावर मिलेगी. अगर हम गैस इंजन भी लो आते हैं, चूंकि बगेड़ी साहब की बात को मैं बगेड़ी साहब की बात को अप्रिशिएट करता हूँ. अगर हमारे पास ऑर्डर इस लेवल पे लोग आ जाएं तो हम सारी चीजें आपको लोकली प्रोड्यूस कर सकते हैं. लेकिन पार्ट्स के अंदर पहले फेज के अंदर हम गैसीफायर का प्लान हमारा, तो गैसीफायर अगर हम लोकल पे जाते हैं और इकोनॉमी ला सकते हैं. अगर हम इम्पोर्टेड तकरीबन 12 से 13 करोड़ रुपए का ये टन की बेसिस प्रोडक्ट हम आपको दे सकते हैं. और दूसरा सवाल है, कार्बन क्रेडिट्स के मिल सकते हैं? जी बिल्कुल सर, कार्बन क्रेडिट पे कार्बन रजिस्ट्री तो है, उस पे लोग हैं काम करने वाले.
यहाँ आरिफ अलाउद्दीन साहब थे पहले ईडी में, वो पिछले दिनों मेरे से मुलाकात हुई है। मेरे बेटे रसीम साहब भी, इनके हल्का बालों में काफ़ी लोग हैं जिनको समझते हैं। तो वो कार्बन क्रेडिट अवेलेबल है, लेकिन वो बल्क क्वांटिटी में है, तो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। तो क्वांटिटी उस सूरत में हो सकती है अगर हम सारी चीज़ों को कलेक्टिवली काम करें, उस पर ले जाएं, तो बिल्कुल सा कार्बन क्रेडिट अवेलेबल है। ग्रीन एनर्जी है। ठीक है, तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट चाहिए, वो रिकॉर्ड हो रहा है, माइक लीजिए। इसलिए कि हमारे मुल्क में हम सोते रहे हैं, जैसे आप सब ने कहा है, हमें जल्द से जल्द सेंट्रल कार्बन रजिस्ट्री चाहिए, वरना खाली बड़े प्रोजेक्ट चलेंगे और छोटे लोग नहीं आ सकते। सिर्फ आपके सवाल का जवाब, मैं जो आपसे कह रहा हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ ऑल्टरनेटिव एनर्जी बने हैं, एक्चुअली उसका काम ये है कि वो एक पूरा नेशनल प्रोग्राम बना के सर्वर जैसे लोगों की मैन्युफैक्चरिंग करवाए पूरी जगह। जब एक नहीं लगेगा, एक पे कार्बन क्रेडिट नहीं बनने शुरू होंगे, जब इतना नंबर होगा तो कार्बन क्रेडिट सामने से, ठीक है। फेडरल रजिस्ट्री, हाँ फेडरल रजिस्ट्री। इसके लिए ब्रिगेडियर साहब ने जैसे एक मॉडल पेश किया, आई लव दैट। हमारा विजन भी है कि जब तक हमारे जो इंजीनियर्स ये सारे जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, इसको रोकने का हमारे पास सोल्यूशन है। अगर हमें बेसिक लेवल पे सपोर्ट, हमें फंड नहीं चाहिए, हमें ऑर्डर चाहिए, हमें बिजनेस चाहिए। हम आपको इसी इकोनॉमी में यही प्रोडक्ट है, ये इंजीनियर सारे इस मॉडल के अंदर सबको हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और भी किसी को कोई क्वेश्चन हो किसी को? सर मेरा एक पॉइंट है, ये जो हमारा फियर ऑफ टेक्नोलॉजी और फियर ऑफ लो कॉन्फिडेंस जो है मैन्युफैक्चरिंग में, इसका क्या हल हो सकता है? सर्वर साहब है, आप उनको कॉन्टेक्ट कीजिए, लेकिन मैं बताऊं आपको इशू क्या है। इशू ये है कि 75 साल से, बेटा आप लोग एक बात सुन लो मेरी, 75 साल से मैं यहाँ खड़ा हूँ सामने, ये इम्पोर्टेड है, ये इम्पोर्टेड है, ये इम्पोर्टेड है, और मेरा माइक और मोबाइल सब कुछ इम्पोर्टेड है। अब मेरा माइक, आप सबका माइक डिफीटेड मेंटालिटी वाला है। We don't think original। आपने कुछ सोची कोई चीज, आप कोई चीज आपको इनकलकेट ही नहीं किया गया ओरिजिनल सोचने के लिए कि आप चले कुछ नहीं, इस मोबाइल का जो चार्जर होता है वो तो लोकल बना है यार, वो तो बिजली का है, सिंपल सा एसी डीसी का मिला, वो तो बना लो लोकल यार, सारी दुनिया को वही सप्लाई करना शुरू कर दो। चाइना को बोलो भाई अब आइंदे से ये तार और स्विच नहीं आएगा, ये हम पाकिस्तानी बनाओ देंगे आप सिर्फ हमें मोबाइल दे दो, चलो ठीक है मान लो। मोबाइल के पीछे कवर प्लास्टिक का है यार, क्या हो नहीं बना सकते? हमें चीजें इंडिजिनसली बनानी है और इम्पोर्ट रिप्लेसमेंट करनी है, और वो आप लोगों ने करनी है। अगर आप लोग नहीं करोगे ना बेटा, तो आप यहाँ खड़े हो गए से पास और लोगों के सवाल का जवाब दे रहे हो क्यों नहीं है। तो आप लोगों को उस सिंड्रोम से निकलना है, ओरिजिनल चीजें सोचनी है, ओरिजिनल थॉट के साथ आप बाहर आए। सर्वर ने 5,000 50,000 से काम शुरू किया, आप लाख से काम शुरू कर रहे, लेकिन आप 3-4 बंदे मिल जाए और सोचे कि हमने कोई काम करना है, और नहीं आप सब बैठे हुए यहाँ पे 1000 के करीब बटन होंगे, सारे इम्पोर्टेंट है। ये मेरा चश्मा चीन से बना हुआ है, 200 रुपए का, यहाँ बना के यहाँ पे 200 रुपए में आया, मास प्रोडक्शन है। ओके, तो हमें एक्चुअली आप लोगों ने ओरिजिनल सोचना है। सो प्लीज थिंक ओरिजिनल, think that you are supposed to do something original which will make you, your family, your country proud of you, and your institute proud of you. Okay? Excellent. MashaAllah. We don't have any questions. We are here to listen to your concluding remarks, please. Remarks, please. My dear colleagues and fellows, we are extremely grateful to our learned speakers. I'm personally highly impressed by the quality of the presentations made today and the coverage that they have provided to the theme, which is very, very important as far as we are concerned. We have already conducted a very comprehensive study on bioeconomy. And the whole discussion that has been done today will be
a great contribution to our effort in line with the international practices and trends. I'm particularly highly impressed the status and the quality of the papers that have been presented today was absolutely superb. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. With this, we come to the end of the seminar. तो हमारा एक टाइम हो गया डॉक्टर साहब लंच का टाइम हो गया हाँ आप देखिए ना आपके पास तो एक आपके पास एक बहुत जबरदस्त लाइव मौजूद है डॉक्टर साहब इंडिजिनस सेक्शन करने के जरूर लगे रहते हैं डॉक्टर आबिद के पास आपको सब जाना चाहिए प्रोजेक्ट आप डॉक्टर आबिद के पास होना चाहिए आपको इंडिजिनस इसमें बना ठीक है थैंक यू वेरी मच can all of you kindly come on video अपनी तस्वीर दिखा दीजिए हम फिर एक तस्वीर लेंगे पूरे पार्टिसिपेंट्स की डॉक्टर हसन डॉक्टर अफजल सोहेल अहमद साहब काइंडली कम ऑन वीडियो इससे मुझे पता भी चलेगा कि आप यहाँ मौजूद थे थैंक यू डॉक्टर साहब डॉक्टर अफजल